नहीं, आप आराम से करें, मैं थोड़ी कहानियाँ वो मैं इसको थोड़ा करके ना, इसका इनिशियल दे के उसके बाद स्टार्ट करवाता हूँ ना आपसे ना। मीनवाइल आप अपनी वो कर लेना। गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी और आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? यस सर। थैंक यू वेरी मच। हमारा आज का जो टॉपिक है वो डेट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, और जॉन मैक्सवेल का लीडरशिप डेवलपमेंट के अंदर बात करें तो उसका एक पिवटल कंपोनेंट है, डेट इज़ 5 लेवल ऑफ लीडरशिप। और उसमें मेरे साथ जो हमें आज इसके टॉपिक को फैसिलिटेट करेंगी वो तबीता जलाल हैं। और being an HR professional, it's our prime responsibility to cater and to develop leadership in different areas in our organization. हमें उस पर कॉन्टीजेंसी के परस्पेक्टिव से भी, सक्सेशन प्लानिंग के अंदर भी, और बहुत से परस्पेक्टिव में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लेवल पे भी लीडरशिप को डेवलप करना होता है। और उस लीडरशिप की डेवलपमेंट के डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, और उन प्रोसेसेस के ऊपर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि हम देखेंगे कि पोजिशनल लीडरशिप क्या होती है, और जो पोजिशनल लीडरशिप के अलावा जो उसका हाईएस्ट लेवल है, पिनकल लेवल, वहाँ तक आप पोजिशनल लीडर को का फ़ायदा उठाते हुए, उसको यूटिलाइज करते हुए जो आप हाईएस्ट लेवल ऑफ लीडरशिप तक कैसे पहुँच सकते हैं। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और इसके लिए मैं फिर थोड़ी देर में एक दो मिनट में जो मेरा ये फोरम है इसको मैं हैंड ओवर करूँगा तबीता जलाल के पास। तो आप मुझे यकीन है कि जिस तरह हमारे प्रीवियस सेशन इस टॉपिक के ऊपर होते रहे हैं, बहुत सी बड़ी बड़ी जो जगह हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इवन नेस्ट में भी हमने इसके ऊपर हमने प्रेजेंटेशन दी, उनके कोर्स में भी हमारा इसको शामिल करवाया। तो वहाँ पे लोगों के अंदर बहुत अच्छा रिस्पांस आया, बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रांसफॉर्मेशनल किस्म के ये सेशन हुए। और ये कंसेप्ट जो इसके अंदर आज समझेंगे आप, हालांकि ये मास्टरमाइंड कोर्स है और एटलीस्ट कंप्लीट कोर्स करने के लिए हमें एटलीस्ट 3 डेज रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम कोशिश करेंगे कि आज इस सेशन को थोड़े से टाइम में कवर करें। और मैं फिर अभी हैंड ओवर करता हूँ अपना फोरम। आई एम रिक्वेस्टिंग मिस तबीता जलाल to please take this session and to facilitate this session. Yes. आप लोग इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस सेशन को इंटरेक्टिव रखिएगा, और उसका एडवांटेज आपको ये है कि आपके बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशनल किस्म के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होंगे, और दिस विल बी हेल्पफुल टू डेवलप लीडरशिप इन योर ऑर्गेनाइजेशन। प्लीज। Hello, good evening. Thank you so very much. What a pleasure it is to be with you once again. And as Mansoor Sahab has already told you, it is a mastermind course that altogether takes 3 days. लेकिन यहाँ पर हमारे पास less than 2 hours हैं जिसमें हमें इसको cover करना है, because we do have a break time as well. और नमाज ब्रेक के लिए भी थोड़ी देर के लिए हम जाएंगे, इसलिए I will request you to please pay attention and
you may have your notebooks, or if you would like to take notes, please get yourself a notebook, and then we are starting off with it. आपने लीडरशिप के हवाले से अगर बहुत फेमस स्टेटमेंट है सुनी हो जो जॉन मैक्सवेल की ही है, लीडरशिप इज नॉट अबाउट पोजीशंस एंड टाइटल्स, सो इट इज अबाउट इन्फ्लुएंस। और जब हम आज बात करते हैं लीडरशिप के लेवल्स की, तो 5 levels of leadership, like starting from the level of position and moving on to the level of pinnacle. It is, a journey, एक process है, एक अमूल है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं. So I would like to make it interactive, and also would like from you कि आप participate करने के लिए भी ज़रूर ready रहें. You can unmute, you can raise hand, but after raising hand then unmute please, and you can write down any question if you find out, if you want to say something. But if you feel that I'm not giving you time, तो आप उसको अपने पास note down कर लें, but do leave us with that question afterwards, and surely we believe that we will answer. Abhi, before starting off with the 5 levels of leadership, let me tell you the objective is to make you know that these are the 5 levels that we are going to talk about today, but what level you are at. आप में से हर एक individual, and then including myself, we can reviewing our lives and find out कि मैं अपनी leadership के किस level पर हूँ, where do I find myself. And I repeat that leadership is not about position or titles. It is about the influence a person as a leader has on others. तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके 5 levels पर बात करते हैं. शुरू. So starting from below, you can see that is level 1, and then that level is known as the position level. Number 2 is the level which is called formation. Number 3 is the level where you talk about production. Number 4 is the level where you talk about people development. Number 5 is the pinnacle level. And moving on to the next levels, to the next details. I'm sorry about the sound behind me. Yeah. So when we talk about what is the level at the beginning, ये यहाँ पर शुरू होते हैं positions से. और position level कौन सा level है leadership में? Don't think that it's the position level is where you are at the very beginning level. No, sometimes position जो दी जाती है किसी शख्स को वो बहुत हायर है, लेकिन वहाँ पर पता चलता है कि उस पोजीशन पर वो लीडर है या नहीं. इस चीज़ का डिफरेंस ज़रूर अंडरस्टैंड कीजिएगा. पोजीशन नहीं बताती कि यू आर अ लीडर. लीडर बताता है कि वो उस पोजीशन पर होकर लीडर कैसा है. सो व्हेन वी आर सेइंग पोजीशन, तो इस पे अक्सर किसी लेवल पर जब कोई शख्स अपॉइंट किया जाता है, तो there are people who are working below him, उनके subordinates हैं, तो वो उनको honor करते हैं उनकी position की वजह से. They like him, they don't like him, but they honor the position. And why does this happen? Because उस position पे रहते हुए उनके लिए benefits हैं. उस position पे रहते हुए like जब वो honor करते हैं किसी leader को, किसी person को,
तो उनके लिए यू नो वो एक तरह से कॉन्स्ट्रेंट्स भी हैं, मजबूरी भी है कि वो उस शख्स को, उस लीडर को ऑनर करे, उसको रिस्पेक्ट करे. नॉट अ मस्ट that the person is likable, not a must that a person is respectable somehow, कि उसकी वो हर बात में इज्जत करें, बट उनको उस टाइम पे ज़रूरत होती है. इस वजह से आपकी पोजीशन की वजह से जब आपको लोग ऑनर कर रहे हैं, आपकी पोजीशन की वजह से जब आपको लोग फॉलो कर रहे हैं, आपकी पोजीशन की वजह से जब आपको लोग रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये वो टाइम भी होता है जिसमें आपको एक मौका मिलता है, पॉजिटिवली देखें हम इसको, तो आप अपनी लीडरशिप को यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं. बिकॉज लेट्स टेक इट फॉर एन एग्जाम्पल कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ मैनेजर अपॉइंट हुए हैं. सो बीइंग देयर एज अ मैनेजर does not make you a leader. वो पोजीशन आपको लीडर नहीं बनाती है. It is you who is going to prove that you are a leader, और आप अपनी उस पोजीशन पे रह के खुद को प्रूव करते हैं. Your skill, your ability to lead others. So जब हम इसी पोजीशन पे रहते हुए चीज़ों को देखते हैं कि हम अपनी लीडरशिप प्रूव करें, वहाँ पर एक बात ये भी आती है that because of the position you don't have to go to people but people have to come to you. यहाँ ये डिफरेंस है. और लोग आपकी तरफ आते हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं, करना चाहें या ना चाहें. लेकिन वहाँ पर ग्रेजुअली मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लेवल, ये बात आप पर है कि आप अपने इस लेवल ऑफ लीडरशिप से नेक्स्ट लेवल पर कैसे जाते हैं. उसमें आपको लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाना पड़ता है. यू गेट टू हैव द बॉन्डिंग विद पीपल. आप लोगों को एक्सेस करते हैं, उनकी जगह, उनकी पोजीशन, like wherever they are sitting in the office, and they are working with you. You visit the team, you ask them, and you जब word देख रहे हैं second level पे permission, so you ask them, you allow them the things to be asked to you. But position के level पर अक्सर चीज़ें restrict कर दी जाती हैं. और अगर कोई positional leader हो तो वो क्या करता है कि वो अपनी position को hold करके, अपनी position somehow वो अपनी पोजीशन को ही समझते हुए कि मैं अब सब कुछ हूँ और इस पोजीशन की वजह से इन्होंने आना ही आना है, और वो इस चीज़ का बस फ़ायदा उठाए, और लाइक ही इज़ कंप्रेसिंग पीपल, और लोग जो हैं वो सप्रेस हो रहे होते हैं उस रवैये की वजह से, जिसमें अ सर्टेन पर्सन does not allow other people to access or approach him. तो वहाँ पर आकर that person is a positional leader, और वो कोई अच्छी एग्जाम्पल सेट नहीं करता. But on the other hand, I said that यही इस लेवल पर आपके पास मौका होता है कि आप अपनी लीडरशिप एबिलिटी और स्किल्स को सामने ला सकें. and you start making relationship with people, you start interacting with them, and by doing so you are now to the next level of leadership, which is known as permission. And here you are into building up relationships with people. अब लोग आपको जो फॉलो करते हैं वो आपकी पोजीशन की वजह से नहीं है, वो मजबूरी की वजह से नहीं है, वो ज़रूरत की वजह से ही सिर्फ नहीं है कि वो आपको फॉलो कर रहे हैं, बल्कि अब लोग आपको फॉलो करना चाहते हैं. वो आपके साथ एक वर्क प्लेस रिलेशनशिप में आते हैं, एंड दे know you beyond this position, and they know you as a person, they know you someone with a character, with the traits of leadership. और यहाँ से अब आगे जब हम देखते हैं तो इसी permission level leadership पर you get to build on your credibility, और उस credibility में you are given production, you are giving results to the organization that you are working at. जिस organization में आप काम कर रहे हैं, आपके लोगों के साथ ताल्लुकात बनाते बनाते आप वहाँ पर results देते हैं, तो that is how people get to know that you are not only
you know, interacting with the people. You are not only, you know, into making the relationships, but you are also into productivity. You are also about the results for the organization. जिसने आपको hire किया है, अगर hire नहीं भी किया है, but if you are there, but you are producing, because companies, organizations, they are all about results. They're all about production. So आप जो relationship build up करते हैं उसी में how well you carry on with the team, how well you make them work, and together you get to achieve the results. और कंपनी को भी उसका फायदा हो रहा है. So now your leadership ability, your capacity is even more enhanced, और वो और ज़्यादा खुलकर लोगों के सामने आती है. And people start respecting you, following you, you know, also because not only you are good with them, but also because you are credible with the organization. और आपकी organization में अब वो देखते हैं कि you are a result oriented person, और वहाँ पर काम भी कर रहे हैं. And then on this third level, जैसे step by step levels establish होते हैं. So the bottom level हमने बात किया position की, और उसी पर फिर permission level आया, and then you still can grow, and that is the production level, and then you still can grow, and that is the people development. People development में reproduction आती है. Reproduction of what? It's about reproducing new leaders, other leaders, next generation of leaders. So it's not about a one-man show. Leadership is about making other leaders, and you know, working on other leaders beside you, developing a generation of leaders. इसलिए अगर एक सोलो फ्लाइट लिए हुआ शख्स के सामने आता है, तो अगेन बात है कि वो किसी पोजीशन पे तो है, लेकिन उसका वो लेवल वहीं पे रहेगा. वो एक ट्रू लीडर नहीं है, बिकॉज अ ट्रू लीडर इज ऑल्सो अ पर्सन, ऑलवेज अ पर्सन हु डेवलप अदर लीडर्स. वो ना सिर्फ खुद को डेवलप करता रहता है, बल्कि वो अदर लीडर्स को डेवलप करता है. सो जब हमने बात की कि एक पोजीशन लेवल पर वो बिल्डअप करता है रिलेशनशिप्स को, और अब लोग उसको बियॉन्ड उसकी पोजीशन के फॉलो करना शुरू करते हैं, तो फिर वो कंपनी के लिए भी कुछ रिजल्ट लेकर आ रहा है. अब उस रिजल्ट के ऊपर बात आ जाती है कि वो खुद तो रिजल्ट्स दे रहा है, उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी तो सेट हो रही है, उसका अपना जो ग्राफ है वो तो बहुत अच्छा हो रहा है एज अ पर्सन, एज अ लीडर ऑन दैट पोजीशन. लेकिन उसके साथ साथ अब वो अपने साथ और टीम रेडी करना शुरू करता है, और टीम को तैयार करना शुरू करता है, जो नॉट ओनली द टीम ऑफ वर्कर्स बट दे आर द टीम ऑफ लीडर्स. सो वो मोर लीडर्स जो हैं उनको डेवलप कर रहा होता है. एंड नाउ ऑलरेडी इट कैचेस यू मोर रिस्पेक्ट. ये और ज़्यादा आपकी इज्जत अफजाई की बात बनती है. लोग और ज़्यादा आपको ऑनर करना शुरू करते हैं कि आप सिर्फ खुद खुद नुमाई वाली बात नहीं होती कि आप अपनी अपनी बात करी जा रहे हैं, आप अपना आप ही दिखा रहे हैं, बल्कि यू नो इट वेरी वेल, यू आर अ वाइज पर्सन, and you know that even when even when you are not in this organization, or if you move on to the next level, there is someone available who can take care of the position that you are leaving. And you know, इसमें कोई insecurity नहीं है फिर कि मुझसे ज़्यादा अच्छा ना कर जाए, बल्कि इसकी ये तवक्को भी होती है कि मैं अगर डेवलप कर रहा हूँ किसी और को एज अ लीडर, तो वो मुझसे ज़्यादा बेहतर करके दिखा. If I did this, I mean, I did a good job on that position. If I'm moving on to next, then the next person that I have prepared वो मुझसे बेहतर करके दिखाए. और इसमें एक अच्छे लीडर को, एक ट्रू लीडर को, व्हेन आई से अच्छा लीडर, एक्चुअली अच्छा लीडर इज अ ट्रू लीडर, जो हकीकत में एक लीडर होगा. सो उसकी अच्छाई उसकी तारीफों में ही सिर्फ इस तरह नहीं आएगी, उसकी अच्छाई वो दिखती है, उसकी अच्छाई नजर आती है. और वो अच्छा ये है कि वो नहीं भी वहाँ मौजूद रहता तो भी
उसकी याद, उसके किए हुए काम, these are, you know, these become remarkable, these are regarded by people who are behind. और इसी लेवल पर फिर हम देखते हैं the next thing establishes and develops, and that is the final level, pinnacle, जिसमें आके वो दर्जा, वो लेवल आ जाता है जिसमें अब लोग आपको कहीं पर भी चले जाएं तो दे ऑलरेडी नो यू एज अ लीडर। हाँ, आपको कुछ भी किए बगैर जो है वो एक लीडर के तौर पे देखा जाएगा। वजह ये है कि ऑलरेडी आप एक लेगेसी सेट कर चुके हैं। ऑलरेडी व्हेन यू वर कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, व्हेन यू वर कवरिंग द जर्नी, और आप उस सफर को तय करते हुए आगे आ रहे हैं, तो यू ऑलरेडी कवर्ड अ लॉट, यू ऑलरेडी डिड अ लॉट। और इसका मतलब ये नहीं कि इस लेवल पे आप कुछ कर नहीं रहे, इस पे आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, आप बहुत ज्यादा कुछ कर रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी आपका एक लीडर के तौर पे नाम बन चुका है। एंड दिस इज द लेवल ऑफ रिस्पेक्ट दैट वेयर एवर यू गो यू डोंट हैव टू शो पीपल, आपको फिर कोई नए सिरे से कुछ करके बता के प्रूव नहीं करना पड़ता। पीपल ऑलरेडी हैव योर नेम एंड यू आर एट द लेवल वेयर यू थिंक ऑफ लेगेसी, जहां पर आपको ये पता है कि मैं अब यहाँ नहीं भी रहूंगा, लेकिन मैंने एक लेगेसी सेट कर दिया और मेरे पीछे आई विल बी, you know, I'll be known by the people, I'll be remembered by the people because of the things that I could do, I have been able to do. So यहाँ तक है। Anything, or if anyone wants to add something here, otherwise we move on. So, एक बड़ी ख़ास चीज़ इस स्लाइड को जब आप देख रहे हैं, आई वॉन्ट टू टेल यू, इट डज नॉट मीन कि जब आप लीडरशिप में ग्रो करते हैं तो आप अपने लेवल्स पिछले जो हैं उनको छोड़ते जाएंगे और तब आप अगले लेवल पे जाएंगे। इट इज़ गुड दैट यू ग्रो ऑन द फाउंडेशन जो यहाँ पर पोजीशन किया, बिकॉज जब पोजीशन किसी शख्स को मिलती है तो एक्चुअली वो उसके लिए मौका होता है वो प्रूव कर सके अपने आप को, अपनी लीडरशिप को। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जब वो नेक्स्ट लेवल पे गया तो पोजीशन को छोड़ देगा, तो ये एक्नॉलेज किया जाएगा कि अब वो नेक्स्ट लेवल पे है, उसी पे रहते हुए ही इज बिल्डिंग ऑन द नेक्स्ट लेवल, और फिर उससे नेक्स्ट लेवल और उससे नेक्स्ट लेवल। सो इट इज इंटीग्रेटेड, ये एक दूसरे के साथ पेवस्ता बात है। बट व्हेन इट कम्स टू पिनेकल तो ज़रूरी नहीं है कि कोई किसी पोजीशन पे हो और उसका सहारा ले, बट यू नो इवन दैट पर्सन इज नॉट वर्किंग विद एनी ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन वो कई ऑर्गेनाइजेशंस के साथ उस टाइम पे काम कर रहा होता है। पिनेकल पे आके उसका ये लेवल आ जाता है कि उसको ऑर्गेनाइजेशंस हायर कर रही होती हैं छोटे छोटे सेशंस के लिए, उसको हायर कर रही होती हैं या उनकी सर्विसेज को वो ऑनर कर रही होती हैं, रिगार्ड कर रही होती हैं एज गेस्ट स्पीकर, ऑनररी स्पीकर्स उनको इनवाइट कर रहे होते हैं या उनको अपने बोर्ड मेंबर्स के तौर पे शामिल कर रहे होते हैं। सो वो हायर लेवल है जिसमें आकर यू नो वो बहुत सारा काम जो है वो वॉलंटियर बेसिस पे भी कर रहे होते हैं, ऑनररी बेसिस पे कर रहे होते हैं, एंड यू नो इट्स नॉट दैट उनको वो पर्टिकुलर पोजीशन देंगे तभी वो करें। समटाइम्स दे आर यू नो जस्ट डूइंग द थिंग्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, और वहाँ पर कोई टाइटल, कोई ऐसा नाम नहीं उनके साथ लगा होता कि ये अब इस ऑर्गेनाइजेशन में यू नो डीजी हैं या सीईओ हैं या सीओओ हैं या कुछ ऐसा, कोई भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नथिंग। It just shows that that person is expert enough, he has experience, and you know he is ready to mentor other people. So next, Abhi, on this slide, what is very clear and prominent, you can see the graph. और यहाँ इस ग्राफ में you can see that जैसे x axis और y axis है algebra में,
So you can see that on one hand, we can see that the more you grow, the level of influence, the degree of influence grows in you. आपका लोगों पे जो इन्फ्लुएंस है वो ग्रो करता जाता है हर लेवल पे, लेकिन उसके साथ ही हम देखते हैं कि जैसे जैसे आपका लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस ग्रो कर रहा है, वैसे वैसे आपका जो टाइम है उसकी लेंथ भी ज्यादा हो रही है, विच सिंपली शोज कि अगर आप समझें कि ये रात भर में हो जाएगा या ये चंद दिनों की बात है, चंद महीनों की, तो आई बिलीव सच पीपल आर नॉट इन द रूम। आप सभी यहाँ तक जो पहुंचे हैं अपनी जिंदगी में, यकीनन आपने अच्छा सफर पीछे तय किया है, जो कठिन भी रहा होगा, मुश्किल भी होगा, नो पेन नो गेन, और बहुत सारी तकलीफें देखी होंगी, बहुत सारे चैलेंजेस में से आप गुजरे होंगे, बहुत सारे अपने सख्त तबीयत अपने बॉसेस को फेस किया होगा, टीम लीड्स को फेस किया होगा, बट थ्रू ऑल थिक्स एंड थिंस यू हैव लर्नड कि आप अपनी पोजीशन पर अगर ग्रो किए हैं अपने लीडरशिप लेवल में, तो आपका इन्फ्लुएंस भी ग्रो किया है, लेकिन सालों गुजरे, टाइम भी लगा। सो इसलिए लेंथ ऑफ टाइम जो है दैट रियली मैटर्स कि वो गुजर रहा है, और यू हैव टू नो कि टाइम तो लगेगा बट आपका इन्फ्लुएंस भी इंक्रीज हो रहा होता है उसमें। आपको दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि उस टाइम में आपने अपना कितना लेवल ग्रो किया है। अगर आपका लेवल ग्रो हुआ है तो डेफिनेटली आपका इन्फ्लुएंस ग्रो होगा। Let's move next. Okay, great sir. हम लोग 7 बजे ब्रेक लेंगे। Yeah, it's already 7, right? And yeah, I'm just told that we have to take a break. So let's go on a break for 10 minutes, sir. Yes, 10 minutes is okay. 10 minutes. And after the break, we shall resume. Thank you. Stay tuned after the break.
Okay, I think we should resume the session. सब लोग आ चुके हैं वापस और फिर हम स्टार्ट करते हैं दोबारा ना. Right. Hi, welcome back. And I just want to confirm if my screen is visible. Thank you. Okay, so we resume from here. Great. Well, now in this slide, you can see it's a little more detail that we have already talked about. And let's quickly review as we are back from the break. So we talked about 4 levels and just built up a foundation. The first level is position, where a person has the right to be, followed, और उस पोजीशन की वजह से लोग उसके पीछे उसको फॉलो कर रहे हैं. उसकी लीडरशिप एबिलिटी यहाँ पर खुल के लोगों को नजर आ रही है, नहीं नजर आ रही है, लेकिन द पोजीशन makes people follow such leader. So यहाँ पर इसी लेवल पे रहते हुए you still have the opportunity to enhance your leadership ability and skill and to improve your level of leadership. और आप लोगों के सामने एक ऐसे लीडर के तौर पर आए जो a true leader है, जो लोगों के साथ इंटरैक्ट करता है, जो उनके साथ बातचीत करता है, जो by interacting, you also get to know that who has what quality, what ability, who is, better in what task, what skill, जो आप उसके साथ मिलकर आने वाले वक्त में, as a team member, उसका इस्तेफादा कर सकते हैं. So इस तरह से, और फिर इसी लेवल पे रहते हुए, when you have built up a good team, तो आपके लिए ये फायदा है, you become more productive. And it's not about seeing the फायदा all the time, but it is that, of course, एक अकेला person कुछ भी नहीं कर सकता है. It is about the team. और जब हम देखते हैं तो टीम जो है वो एक्रोनिम है, together everyone achieves more. So T as together, and A is E is everyone, A is achieve, and M is more. So this is how big the word team is. A true leader is about a team, and he does not take a solo flight. फिर उसी पे रहते हुए, when he or she is given production for the company, so definitely for that organization, that company, this is what makes him a person credible of his position. कि इसको अगर रखा है तो yes, वो उस organization के लिए फायदेमंद हो रहा है. और फिर उसके बाद इसी पर आकर, it's not about him alone taking the credits or but now he looks to develop other leaders वहाँ पर ही रहते हुए, and वो second generation of leaders है जिसकी हम बात कर रहे थे. इसलिए वो अपनी कंपनी को ग्रो करता है किस तरह से, by recruiting right people. जब हम HR की यहाँ पर बात करते हैं तो this is where you can show your leadership skills and abilities, that you get to hire and you get to hunt the right people on the right positions. And then even if they are not equipped already, but you invest in them and you equip them, and that is how it makes you succeed as a company, as an organization. And then
you grow more from here, and you continue in your journey of learning and growing as an inspiring and nurturing leader. So we move on to the next slide. Now let's quickly get into 10 insights that this book provides. And the book's name is 5 Levels of Leadership. And these, insights are interplayed between these 5 levels. Or kya hai? When you move up a level, you build on the previous level, you don't leave it behind. I've already spoken about it. Next is leadership is dynamic. You can work at a different leadership level from one team member to the next. अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि जब आप एक लेवल ऑफ लीडरशिप पे ग्रो कर रहे हैं और आप फिर उस लेवल पे चले गए हैं तो आप पिछला लेवल बिल्कुल छोड़ गए हैं. It does happen this way that different times में आपको different team members के साथ जो है वो अपने different levels को practice करना पड़ता है. Like sometimes you already are let's say a level 4 leader. That does not mean कि अब दोबारा कभी level 2 को टच नहीं कर सकते हैं, level 1 को टच नहीं कर सकते हैं. That means कि अगर वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है तो there is a new team member with you. तो अभी वो चीज़ों को नहीं उस तरह से समझ पाया तो you are building a relationship, which means you are working level 2 with that new person. And also आप अपनी किसी और टीम मेंबर के साथ काम कर रहे हैं and like they are taking you for granted, they are not ready to give you the results. तो अपने उनके साथ अच्छी काउंसलिंग भी कर ली है, सब कुछ भी है, आप बैठे हैं, आपने बात भी किया है और आप अपनी प्रोडक्शन के हवाले से जो 3rd लेवल है आप रिजल्ट ओरिएंटेड है, आपको रिजल्ट्स चाहिए, बट दैट पर्सन इज टेकन इट सो लाइट. तो वहाँ पर आप लेवल 1 जो पोजिशनल लेवल है उसको काम में लाएंगे और आप उस लेवल पर जाते हुए like utilizing your authority at your position, you can take some decision that may be hard for the person. It's maybe suspending, maybe adding more job to his work, like कुछ भी और ज़्यादा काम दे रहे हैं आप, or maybe you are dismissing the person. So this is how it works. This is how leadership is dynamic. And then the higher you go, the easier it becomes to lead. And I believe you all are going to agree with this. Yet it's an insight, so it's already been proven. Yeah, जब आपकी पोजीशन जितना ज़्यादा बढ़ती जाती है उतना ज़्यादा आपका लोगों से काम लेना आसान हो जाता है और उसमें एक लोग आपको एक्नॉलेज करते हैं. और कई बार ऐसा होता है कि जब हमसे एक लेवल ऊपर कोई लाइक पोजीशन में कोई लीडर हो, वो हमें काम के है तो हम शायद उसको करते हुए थोड़ा सा डिले कर सकते हैं और लाइक देयर कैन बी सम प्रोक्रेस्टिनेशन. लेकिन अगर यही काम जो है मे बी कंपनी के CEO या कोई और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डायरेक्ट आकर बोल देते हैं कि आप करें तो हमें करने के हवाले से तेज़ी और ज़्यादा हो जाती है. सो ये it's proven that the higher you go, the easier it becomes to lead. And people, get to listen to you more attentively because of the levels that you have grown onto. And then it's there is no shortcut to get to the next level. ये यकीनन सब इसके साथ एग्री करेंगे that there is no shortcut. अगर कोई shortcuts लेकर आता है तो that person does not have experience. इसी वजह से फिर उसकी credibility भी establish नहीं होती. That person does not have a character of a leader.
तो उसके अंदर वो लीडरशिप के ट्रेट्स डेवलप नहीं होते हैं, बिकॉज शॉर्टकट्स के साथ आने वाले लोग दे लैक अ लॉट, और इस वजह से दैट डज नॉट मेक देम अ ट्रू लीडर. इसलिए going to the next level, you require more time, you require more effort than the previous one. Then the next insight is, although moving up a level takes a lot of time, moving down one or more levels can happen very quickly. यकीनन सब इससे इत्तेफाक करेंगे, बिल्डिंग को बनाते सालों लग जाते हैं, लेकिन जब डिमोलिश होती हैं आजकल के एडवांस दौर में तो वो सेकंड्स लेती हैं. लाइकवाइज हम देखते हैं कि कैरेक्टर्स बनते लोगों का टाइम लगता है. लाइक जस्ट टू मेंशन लीडरशिप पे या मोटिवेशन पे बहुत ज़्यादा बात करने वाले एक मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह साहब. सो कितना उनका एकदम से नाम बनना शुरू हुआ, लेकिन वो नाम एकदम नहीं बना, उनके उसके पीछे लोगों के सामने अगर वो एकदम आया तो एक शख्स की एफर्ट्स बहुत सालों से थी, तो उनको इतना ज़्यादा टाइम लगा है. बट यू नो अभी कुछ टाइम पहले, मे बी फ्यू मंथ्स, तो किसी जगह पे बैठे हुए किसी पॉलिटिकल लीडरशिप मीटिंग में सिर्फ उनके बैठने के पोस्टर के हवाले से पीपल स्टार्टेड ट्रोलिंग हिम, और लोग उनके हवाले से ये बात करना शुरू हो गए कि इतने डरे सामने बैठे हुए हैं, ये मोटिवेशन की बात करते हैं, ये दलेर होने की बात करते हैं, ये अपने राइट्स की बात करते हैं, और इस तरह से एंड लाइक द हाइप दैट ही हैड अचीव्ड, वो सब कुछ एक खबर की नज़र होके तो बहुत ज़्यादा बैड इम्पैक्ट आया उस चीज़ का. एंड नाउ वी कैन नॉट सी हिम ऑन दैट लेवल ऑफ क्रेडिबिलिटी. सो या इट अफेक्ट्स. आपको सालों लगते हैं अपने लेवल्स को इम्प्रूव करने में और उनको अचीव करने में, लेकिन वहाँ से गिरने में थोड़ा सा ही टाइम लगता है. एंड देन another insight, number 6, it says the higher you go, the greater returns. Yes, ऐसा भी है, and I believe that you have experienced already. जितना ज़्यादा आप ग्रो करते हैं उतना आपकी वैल्यू बढ़ती है, जितना ज़्यादा आपकी वैल्यू और वर्थ बढ़ती है उतना रिटर्न उसका आ रहा होता है. इफ नॉट टुडे, definitely someday it happens. So would any of you mind reading the next insight and a little bit of explanation about it? If you agree, disagree, any of you can unmute, और आप 7 से 10 तक इसको quickly एक पढ़ सकते हैं, and then you can explain. Because मुझे याद आ रहा है कि शुरू में मैंने कहा था let's make it interactive. Now I'm feeling like just I'm speaking. I hope आप सब मौजूद हैं और कोई भी कैमरा तो ऑफ है, लेकिन आप लोग कहीं चले नहीं गए हैं. Okay, Sure. I can ask Mansoor sir. थैंक यू. यस प्लीज, आई नीड के आप सब लोग पार्टिसिपेट करें इस सेशन के अंदर और इसको अंडरस्टैंड करें इन कंसेप्ट्स को ना. दिस कंसेप्ट विल बी हेल्पफुल फॉर यू पर्टिकुलरली. अगर एक एक चीज़ को आप समझ जाएंगे ना जो आज हम बता रहे हैं, यहाँ बताया जा रहा है, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लीडरशिप को डेवलप करने के पर्सपेक्टिव से, राइट. तो फिर आपको कंटेक्चुअल कर लेंगे अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो जो लीडरशिप का जो जो लेवल है उसको, कि वहाँ पे हो क्या रहा है, और आपने आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो स्ट्रेटेजिक लीडरशिप है, ऑपरेशनल लीडरशिप है, टेक्निकल लीडरशिप है, आप उनको किस तरह फैसिलिटेट कर सकते हैं टू अपलिफ्ट देयर लीडरशिप पोजीशन, राइट. तो ये बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा कि आज के इस कंटेंट को समझने की कोशिश करें, और अगर अभी इसके बाद भी इसको रिव्यू करें, जब आपके साथ रिकॉर्डिंग के लिंक शेयर हो जाएंगे, आपके साथ जब कंटेंट शेयर हो जाएगा उस वक्त भी, और अभी भी कोशिश करें कि आप साथ साथ रहें
अंडरस्टैंड करें हर स्टेप को, राइट? थैंक यू। Yeah, so the next one, अगर रेहान या उमायमा आपने रिप्लाई किया है तो आप अगर इसको रीड करते हुए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकें, what do you understand from the statement number 7? Moving to the next level always requires growth. Assalamu alaikum everyone. Ma'am, number 7, the moving to the next level always required growth. मैम जब भी आप ग्रो करते हैं और आपको प्रमोशंस होती हैं तो आपको किसी बेस के ऊपर होती है, ऐसे नहीं आपको प्रमोशन दे दी जाती कि यू आर स्पेंडिंग नंबर ऑफ इयर्स इन ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके लिए रिक्वायरमेंट प्री रेक्विजिट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग ये सर्टिफिकेशंस कह रहे हैं या जो भी कह रहे हैं, ऑल वी नीड टू मूव टू नेक्स्ट लेवल। उसके लिए हमें ग्रोथ चाहिए और ग्रोथ के लिए हमारे पास डिजायर्ड गोल्स होने चाहिए और डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए जो अलाइन हो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। और ये नहीं है कि मैं कोई ऐसी सर्टिफिकेशन करता रहूँ जिसकी मेरी ऑर्गेनाइजेशन से अलाइनमेंट ना हो, उसकी रिक्वायरमेंट ही ना हो और मैं वो करता रहूँ। कल मैं अपने बॉस को कहूँ सर मेरे पास ये भी लेट्स से कि मेरी एक ऑडिट फर्म है तो मैं कोई सॉफ्टवेयर के अंदर किसी लैंग्वेज के अंदर सर्टिफिकेशन करके आ जाऊँ कि वो मेरे किस बेनिफिट के लिए। you are designated as an HR manager, you should be having a certification in HR or something like that. तो मैम ग्रोथ के लिए ऑलवेज रिक्वायर्ड है कि जब भी आपको नेक्स्ट लेवल प्रमोट होते हैं तो ग्रोथ के साथ साथ आपको वो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं जो हेल्प करें अकॉर्डिंग टू द लेवल रिक्वायर्ड लेवल। ये नंबर ऑफ इयर्स डिपेंड नहीं करते और ये डिपेंड नहीं करता कि आपकी एज कितनी है। ऑल इज नीड द नंबर ऑफ मतलब यू हैव टू बी इन द सेम पॉकेट, नॉट इन अ डिफरेंट बॉक्स। Agree? Yeah. And जी मैम। yeah, so if you have to, switch or shift from one to the other organization, like a different position, उसके accordingly आपके पास knowledge होना चाहिए और उसके according जैसे रेहान ने बात की है कि आपके पास relevant certification होनी चाहिए। Thank you. About the next, number 8. Okay, so I agree to Rehan and what you said, ma'am. It's more of relating to point number 1 as well, the point number 7, because when you said कि हमें level up करना होता है, we move to a level, move up a level, तो हमारी जो learning है, जो भी हमारी capacity building है, वो पीछे नहीं रह जाती, वो हमारे साथ grow करती है। So the same point is saying कि हमारी growth जो होती है वो हमारे next level में हमारे साथ होती है, because हमारी जो learning है वो कभी भी stagnant नहीं होती और वो कभी भी पुरानी learning हमारी following learning को कभी भी disregard नहीं कर रही होती। It's always a continuous process. It's always an acceleration in the growth. So point number 1 and point number 7 correlate with each other. Yeah. Secondly, about the 8, not getting to the next level not only limits you, but it also limits each of your team member. So exactly, वही stagnant वाली बात है। अगर हम अपने आप को grow नहीं कर रहे, we are not learning anything, we are just having वही day routine काम और अपने आप को personally और professionally दोनों तरह से अपनी learning को expand नहीं कर रहे हैं, so वो एक stagnant एक सीलिंग इफेक्ट आ जाता है कि हम वही रिमोट जॉब कर रहे हैं, मशीन वाला काम कर रहे हैं, बिकॉज वी आर ह्यूमन। पहले वाले लेक्चर में हमने ये भी सुना है कि ह्यूमन रिक्वायर्स ग्रोथ एंड ह्यूमंस रिक्वायर कंटिन्यूअस लर्निंग। सो अगर लर्निंग नहीं है तो फिर हम स्टैग्नेंट हैं और वो हम रोबोट की तरह के हैं, अदरवाइज वी आर नॉट ह्यूमन। Yeah, greatly participated. Anyone about 9 and 10? Yes, I want to add here regarding the point number 9. When you change the position or the organization, you really stay at the same level. Obviously, if we are going for the professional growth and the personal development, जब हम ये सारे काम करें तो obviously I also agree with Rehan and my colleague as well. लेकिन यही वाली बात है कि जब हम पर्सनल ग्रोथ के लिए डेवलपमेंट के लिए कोर्सेज करते हैं, सर्टिफिकेशन करते हैं, अपनी कैपेसिटी बिल्ड करते हैं, ऑब्वियसली हम ऑर्गेनाइजेशन में तो ग्रो कर रहे होते हैं। इफ यू आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, द सेम ऑर्गेनाइजेशन, इफ अगर हमें चांस मिलता है टू वर्क इन अदर ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्वियसली अगर इफ आई एम वर्किंग ऑन अ मैनेजर पोजीशन, तो मैं जब भी जाऊंगी या किसी और ऑर्गेनाइजेशन में तो ऑब्वियसली मेरी अपग्रेडेशन होगी ऑन द बेसिस ऑफ माय प्रीवियस एक्सपीरियंस, माय सर्टिफिकेशन, माय प्रोफेशनल एक्सपोजर एंड एवरीथिंग। सो ये सब कुछ एड ऑन करता है टू योर रिज्यूमे एज वेल एंड टू योर पोर्टफोलियो एज वेल।
यही हमें ग्रोथ में हेल्प करते हैं, और दिस इज व्हाट द करियर लेडर इज ऑल अबाउट. थैंक यू. Great. Yeah, great participation. Thank you. Anyone else about the 10th insight? We all agree with this. You cannot climb the levels alone. So it is always about the team. Yes, Umayma, you can add. Yes, of course, because like I said कि अकेले तो learning हो ही नहीं सकती. अकेले हम कोई भी काम करते हैं, हम अपने experience से learning करते हैं, but again that's a teamwork and the organization, the support you have got with your team members, चाहे वो positive हो चाहे वो negative हो, हर तरह के लोग हर organization में मौजूद होते हैं. So हमारी growth में कहीं ना कहीं हर तरह के लोग पॉजिटिवली और नेगेटिवली हमें इम्पैक्ट कर रहे होते हैं. नेगेटिव से भी हम पॉजिटिव लर्निंग ले सकते हैं, लेसन्स लर्न कर सकते हैं. सो इन दैट वे हर एक्सपीरियंस इज अ लर्निंग एक्सपीरियंस. यूजुअली इंटरव्यूज में सवाल किया जाता है सबसे ज्यादा मुश्किल टाइम कौन सा था, या यू वांट टू रिग्रेट ऑन सम पार्ट ऑफ योर लाइफ. I have always answered and replied to the question कि मैंने कभी भी अपने लाइफ के किसी भी एरिया में रिग्रेट नहीं किया, because that's an experience and that's a learning I have learned. So again this is, and again growth can be vertical and can be lateral as well. अगर हम similar level पे भी switch कर रहे हैं different organization में, so हमारी diversification अगर आ रही है हमारी job में, और हमारी different skills अगर हम learn कर रहे हैं, बेशक वो similar level पे हैं, तो again that's a growth. Right. Thank you for the valuable addition from all of your side, and I really value that. Let's move on to the next. Now, again, it is the insight that you have already spoken about, and अभी और ज़्यादा डिटेल में आके पोजीशन लेवल पर हम देखते हैं कि चीज़ें क्या होती हैं, how do they work. So quickly, knowing from here that this is the first level where you are boss and people follow you, they have to, and your influence does not extend beyond job descriptions. आप उतने influential हैं जितनी आपकी job है. Like लोग जानते हैं कि अच्छा कि manager है, operations manager है, so जो आपका level जानते हैं उतने के मुताबिक वो आपका influence देखते हैं. इसलिए it's really important, जैसे हमने already बात की है, कि आपकी इस पोजीशन पर जो आपकी अथॉरिटी है, जो आपके अंदर का पोटेंशियल है, आप उस अथॉरिटी में रहते हुए अपने उस पोटेंशियल को एनहांस कर सकते हैं, बिकॉज ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है. एंड नॉट ओनली दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू आपकी लीडरशिप स्किल्स को दिखाने के हवाले से, बट ऑल्सो दिस इज अ गुड प्लेस टू स्टार्ट विद, जहाँ पर आप कंटिन्यू करते चले जाएं और लेवल्स की तरफ आप एक्सीड करते चले जाएंगे. एंड नाउ द नेक्स्ट स्लाइड टॉक्स अबाउट द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स. और अब पोजीशन यानी जो बॉटम लेवल जहाँ से हम शुरू कर रहे हैं लीडरशिप के लेवल्स को देखना, उसके अपसाइड्स भी हैं, डाउनसाइड्स भी हैं. सो क्विकली फ्रॉम योर साइड अगेन, कोई एक अपसाइड्स की बात कर दे और कोई दूसरा डाउनसाइड्स की, और थोड़ा थोड़ा बाय रीडिंग इट, इफ यू गेट टू शेयर सम एक्सपीरियंस, आपको लगता है कोई उससे मुताल्लिका एक्सपीरियंस आपके पास है, तो प्लीज यू कैन शेयर एनी ऑफ यू. Don't wait for others. You can simply unmute and carry on. The upside of the position, a leadership position is usually given to the people because they have leadership potential. Yeah. Ma'am, I agree with this कि आपको leadership या आपको ऐसा रोल इसलिए दिया जाता है कि आपके अंदर कोई leadership skills होते हैं. वो with passage of time तो पॉलिश हो ही जाते हैं, लेकिन आपको इसलिए दिया जाता है कि आपको अथॉरिटी भी, इसके साथ अथॉरिटी मिलती है ताकि आप लोगों के लिए उनको गाइड कर सकें, उनको एक जो है समझा सकें, उनको पैटर्न, उनको एक स्ट्रीमलाइन कर सकें उनके कामों को. इसलिए मैम नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में या जनरली हर लेवल पे मैनेजर्स और उनकी डिवीजन्स की जाती हैं
और बंदों को मैम जो लीडर्स होते हैं वो बेसिकली इसलिए लीडर नहीं होते कि उनके पास पोटेंशियल होता है, बेसिकली दे हैव द पोटेंशियल टू फेस द रिस्पांसिबिलिटी एंड द कॉन्सिक्वेंसेस। वो रिस्पांसिबिलिटी लेते हैं चीज के बारे में जो उनको दी जाती है, और उसके बाद जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, वो उसको फेस करते हैं और उसके बारे में और उससे जो उनको कुछ मिलता है वो उससे सीखते हैं और उसकी बेहतरी का ऑर्गेनाइजेशन की बेहतरी की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं उसके अकॉर्डिंगली। और अगर मैम डाउन साइड ऑफ दिस पोजीशन बात की जाए, मैम कभी कभी आप पोजीशन एज ए लीडर तो ले लेते हैं, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है कि आपके अंडर नीचे जो काम करने वाले लोग हैं वो अंडर वैल्यू अपने आप को समझते हैं। वो समझते हैं कि ये मैनेजर अपने जो है ना अथॉरिटी का ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है और नाजायज इस्तेमाल कर रहा है। जैसे कि मैम कुछ लोग हार्श हो जाते हैं काम लेने के चक्कर में। आई थिंक लीडरशिप शुड बी वेरी क्वाइट एंड वेरी डिप्लोमेटिक in concern of the organization goals achieve करने की। That's all from my side. Yeah, I agree with that. It does happen that many times they start devaluing people, or उसमें आके, you know, it's not about money. It's nothing about, you know, like आपके पास क्या है क्या नहीं है कैसे, लेकिन it is about the people. So लोगों को वैल्यू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है in any organization, anywhere. एक घर जो है वो घर तब बनता है वरना वो मकान है जब people live together. So it is about the family. Likewise, एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे एक्नॉलेज तब होती है जब उसके लोगों को वैल्यू किया जाता है, तब वो लोगों के दरमियान एक्नॉलेज होती है। जिस टाइम पे आके जस्ट उसकी प्रोडक्ट की बात करें तो वहाँ पर उनका डिफेम शुरू हो जाता है, फेलियर शुरू हो जाता है, that when they are only about the product and not about the people behind the product. So yeah, this is the downside of a position. And next please, anyone? Leadership position mean authority is recognized. ये तो इसकी पॉजिटिव साइड है, तो मैं चाहूँगी आप में से पार्टिसिपेट करते जाएं and then we can save time as well. मुझे बहुत कुछ बताना है और टाइम कम है। So leadership position जो है पोजीशन पे रहते हुए, यस इट्स द गुड थिंग कि एटलीस्ट आपकी अथॉरिटी रिकग्नाइज की जाती है, लेकिन डाउन साइड ये आ जाती है कि यहाँ पर अक्सर होता है कि पोजिशनल लीडर्स जो हैं वो पॉलिटिक्स का शिकार हो जाते हैं। यू बीइंग HR पर्सन ऑलरेडी नो कि ये क्या पॉलिटिक्स, प्रोफेशनल पॉलिटिक्स जो चल रही होती है ऑफिस में क्या है, किस तरह से है, जिसमें आप कंट्रोल पर ज़्यादा ध्यान दे रहे होते हैं इंस्टेड ऑफ कंट्रीब्यूशन, और ज़्यादा राइट्स की बात के ये मेरा काम नहीं है, वो मेरा काम नहीं है, मैंने इतना ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। सो आपका ध्यान कंट्रीब्यूशन से हट जाता है। सो ये इसकी नेगेटिव साइड भी है पोजीशन को होते हुए। फिर पोजिशनल लीडरशिप की पॉजिटिव साइड है, अ लीडरशिप पोजीशन इज़ एन इन्विटेशन टू ग्रो एज अ लीडर, जिस पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि यस, इससे ये फ़ायदा है कि आप ग्रो कर सकते हैं नेक्स्ट लेवल पे, ये तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। और फिर उसके बाद है लीडरशिप, जो इसकी डाउन साइड है, पोजिशनल लीडर्स प्लेस राइट्स ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो अक्सर चीज़ों में वो नहीं कर पाए तो फ़ौरन से कि नहीं ये मेरा तो काम ही नहीं था, तो उनको पता होता है कि फ़ौरन से मैं अपना जो है वो JD दिखा दूँ या JD पे बात कर लूँ कि मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन ये है एंड इट्स वेल डिफाइंड, मेरी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इससे आगे तो मुझे नहीं करना था, इसलिए आई एम फ्री ऑफ इट। तो अपने आप को डिफाइन क्विटेड, तो वहाँ बरियो जमा कर लेते हैं खुद को, तो दूसरों पे बातें डाल देना, ये इसकी डाउन साइड है। यहाँ पर आकर फिर इख्तलाफात होते हैं, बदगुमानियाँ होती हैं, और ये है कि जो ऑलरेडी फिर रिलेट भी करता है कि पॉलिटिक्स को और ज़्यादा जो है वो स्टरअप किया जा रहा होता है यहाँ पे। देन अपसाइड जो है वो है अ लीडरशिप पोजीशन अलाउ ऑप्शनल लीडर्स टू शेप एंड डिफाइन देयर लीडरशिप। अगर कोई ऑप्शनली रख भी दिया गया है ना, लाइक इस पोजीशन पे लाया गया है, पोस्ट कर दिया गया है, तो उसने अगर पहले नहीं सोचा, बट नाउ दिस वुड बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर द पर्सन कि वो वहाँ से ग्रो करना शुरू करे और अपनी लीडरशिप को डिफाइन कर सके, उसे शेप कर सके। Whereby another downside is positional leadership is often lonely. Yes, क्योंकि अगर अपनी पोजीशन को ले लेके बैठे
or don't give people permission and don't interact with people, तो already फिर लोग आपको avoid कर रहे होते हैं और आप फिर अकेले ही वहाँ पर होते हैं. We get to see in organizations, it's about your attitude, it's about your level of respect that you give to others give to you. But if stick to position, तो फिर लोग भी आपकी पोजीशन देखते हुए सर मैडम वो फिर पीछे ही रहेंगे कि बस ठीक है, इनके पास नहीं बैठना और इनके साथ जाके हम बात नहीं कर सकते हैं. So this is what happens, and you have an experience about that. Next is turnover. ये downside ही है is high for positional leaders. People quit people, not companies. और अगर आप देखें तो जो प्रोफेशनल सोशल साइट है उस पे हम देखते हैं कि ये बात बहुत ज़्यादा आजकल सर्कुलेट हो रही है. पीपल क्विट पीपल, नॉट कंपनीज. लोगों के रवैयों की वजह से लोग जॉब छोड़ जाते हैं. इट्स नॉट अबाउट द लो सैलरीज, इट्स नॉट अबाउट द कंपनी में ये था या वो. मोस्टली इट इज़ अबाउट पीपल, कि उनको अगर अपने ऊपर अच्छे लीडर्स नहीं मिले हैं, अपने साथ काम करने वाले उस लेवल पे नहीं मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली वो उस स्ट्रेस को लेना नहीं चाहते, वो सुकून चाहते हैं. इसलिए यहाँ पर टर्नओवर भी बहुत ज़्यादा है. अक्सर लोग फिर छोड़ जाते हैं जॉब्स. एंड देन पोजिशनल लीडर्स रिसीव people's least, not their best. ये भी होता है. जाहिर है जब वो हर टाइम प्रेशराइज कर रहे हो लोगों को, तो फिर लोग भी काम से काम रखते हैं. लोग आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाना चाहते, लोग कुछ एक्स्ट्रा नहीं करके देना चाहते, कोई एक्सपेक्टेशन एक्सीड नहीं करना चाहते. लोग बल्कि एक्सपेक्टेड लेवल से भी पीछे ही करके देते हैं. तो दिस इज व्हाट हैपेंस. यस रेहान, यू कैन ऐड हियर. मैम ये जो आपने बात की ना, टर्नओवर इज हाई फॉर पोजीशन, दैट्स वेरी ट्रू. बट द थिंग इज के मेरे एक्सपीरियंस के में तो ये है कि मैं नंबर ऑफ पीपल आजकल के मुताबिक मैं बात करूँ, प्लीज थॉरो ट्रुथ, लोग इसके बारे डिस्कस नहीं करते. लेकिन एज एचआर मैनेजर मैंने इस चीज़ को देखा है कि मैम लोग पीपल आर मोर टूवर्ड्स मॉनेटरी बेनिफिट्स. आजकल दे डोंट हैव लॉयल्टीज, दे डोंट हैव पीपल. मैम लोगों को बहाने चाहिए लोगों की बेस के ऊपर छोड़ने के लिए ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज दे हैव मल्टीपल ऑप्शंस लाइक रिमोट जॉब्स, फ्लेक्सिबल ऑप्शन, ऑल दैट, या फ्रीलांसिंग की वजह से. लेकिन ये है कि मैम प्रोफेशनल लीडर्स के ऊपर आता बहुत कुछ है कि मैम के जैसे हम लोगों पे कभी कभी बात आ ही जाती है कि ये जरा काफी सख्त लोग हैं इसके अंदर डिसिप्लिन के वाइज और इन चीजों में. तो मैम ये चीजें तो हम सुनते ही रहते हैं. लेकिन नंबर ऑफ टाइम हमने ये ऑब्जर्व किया कि लोग फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी बेनिफिट्स की वजह से ही छोड़ते. जब मैम हम उनका एग्जिट इंटरव्यू लेते हैं तो हमें सब कुछ पता चल जाता है. एंड पे मैम फाइनेंशियल्स ही आते हैं, फाइनेंस ही आती है. I have to take care of my parents. I don't know how come they are taking care of their parents if they are taking care from last 40 years. ये मैंने समझ नहीं. आप ठीक कह रहे हैं एंड आई एग्री विद दैट. हमारे यहाँ पर फाइनेंसेस के हवाले से यस, और फिर ये है कि लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा ये चीज़ है भी. तो अभी आई स्टिल गेट टू सी कि अब ऐसा है भी जहाँ पर आकर लोग देखते हैं कि लाइक फाइनेंसेस उनको मैटर नहीं कर रहे होते, उनको मैटर कर रहा होता है ज़हनी सुकून. तो वहाँ पोजिशनल लीडर्स की वजह से ये चीज़ जो है वो टर्नओवर वाली ये हो रही है. although if not much but little is happening. लेकिन I do agree with you as well कि yeah, finances do matter more. पाकिस्तान में तो यकीनन करते हैं. Moving to the next slide. How to make the most of your position. So उसके हवाले से यहाँ पर 2 statements दिए गए हैं. Don't push people, help them and take an interest in them. Definitely, because एक conference थी and otherwise भी John Maxwell की books में ये बात लिखी हुई है. And as you already know, जो आज हम ये book somehow it's not the whole thing जो पूरे का पूरा हम पढ़ रहे हैं. It's kind of just the highlights of the book. In 2 hours में यही हो सकता था. तो he went to a conference, and was conference में he said that I asked the
leaders who were present there from different organizations. और उनसे मैंने ये सवाल किया कि when it comes to the people who are working with you as a team, so do you ask these questions to yourself? And if you don't, from now onward, start asking these questions. You can write these questions for yourself here, all the participants today. First of all is, do you care for me? As an employee, as a subordinate, when a person is working with you, working under your supervision, तो उसको like आप से ये required है कि क्या आप उसकी केयर करते हैं? यहाँ आकर you can bracket it, are you compassionate about that person? ये आपका one of the leadership traits and leadership character. And then second question is, can you help me? That is what a person thinks. Like if they are working with you, and when they need your help, would you be able to help them? So this is the second question. And it shows that can they be confident of you? वो आप पर एतकाद कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं, और तब फिर वो आपको फॉलो करना चाहेंगे, तब वो आपके साथ काम करना चाहेंगे. सो अगेन बात हो रही है लीडरशिप की, लीडरशिप के लेवल्स की. और ये याद रखिएगा, लीडरशिप इज नॉट अ नाउन, इट्स अ वर्ब. इट इज नॉट a name thing. It is service, it is an action. So हम बात कर रहे हैं कि you being on your position, are you being such a leader for the people who is careful towards them, that people are confident about you and they know that under your supervision they can trust you, and if need be ज़रूरत पड़ती है, you are there to help them. And then the third question is, second was can I help? Can you help me? And the third one is, can I trust you? जिसका मतलब आपका वो character, आपकी leadership में, जिसमें people are ready to follow you and they know you that you are beyond this position. So generally, when we get to ask these questions, एक true leader वो definitely इन तीनों में tick कर देगा. Maybe दो में, third one में, second one में, first one में से किसी एक को miss करते हुए. But this is what is going to help you simply in these three questions, that where can you improve and how do people find you as a leader around them. So ये है कि आप अपनी position पर होते हुए उसका ज़्यादा इस्तेफादा कैसे कर सकते हैं. वैसे ही है, to push people, help them and take an interest in them. And then next is, don't expect your people to come to you. You must initiate things to earn their respect. पोजीशन की वजह से हमें लग रहा होता है, शुरू में भी बात की, कि लोगों को ज़रूरत होएगी, वो आएंगे मुझे अपना काम बताने, रिपोर्ट करने के लिए, उनको आना ही है. लेकिन why should you wait for that? If you are a true leader, you would not. You definitely are going to interact with them, और इसी पे आप permission लोगों को दे रहे हैं, लोगों की परमिशन ले रहे हैं to ask them more. And you are building a relationship where you know the people around you, know your team, know the workers beside you, your colleagues behind that wall of position that is around you. और उससे आगे आप उनको जानते हैं, beyond that. Now, the laws of leadership जो apply होते हैं यहाँ पर, मैं उसकी बात करना चाहूँगी. So, these laws of leadership at the position level, वो कौन से हैं जिनको apply करके आप better हो सकते हैं और आप और next level पे grow करते हैं. तो ये याद रखिएगा, ये वाले जो laws आगे भी और आएंगे हर level के साथ. These are the laws taken from John C. Maxwell's world renowned book called
21 irrefutable laws of leadership are as the one of the bestsellers. और उसमें आकर 21 irrefutable laws में this is the first law, the law of lid. A law of lid जो है, it says to unlock your effectiveness, you must commit to developing yourself as a leader. तो बात यही आती है ग्रो करने की. आप देखें अगर ये लिड है तो कभी भी जो उससे नीचे की चीज़ है वो उससे ऊपर नहीं हो सकती है. सो अगर आपका अपना लिड ये है और आप कहें कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन उससे ऊपर हो जाए, उससे ज़्यादा ग्रो करे, कभी भी नहीं करेगी. सो लॉ ऑफ लिड ये बताता है कि जितना ऊपर लाइक आपके पोजीशन का आपकी लीडरशिप का लेवल होगा, उतना ज़्यादा आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कंपनी, आपकी टीम का लेवल होगा. और द हायर यू ग्रो द हायर यू गो. सो जितना आप ग्रो करते हैं उतना आप आगे जा सकते हैं. दिस इज हाउ दिस लॉ is applicable at this position level. फिर उसी तरह से नेक्स्ट है law of process. और इसमें आकर we get to know कि कुछ भी overnight नहीं हो जाता. इसमें जर्नी है जिसमें आप खुद को डेवलप करते हैं, और जब आप एज अ लीडर डेवलप करते हैं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली ग्रो करेगी, डेवलप होगी. व्हेन यू आर ग्रोइंग इट इज ऑल्सो ग्रोइंग. व्हाई? बिकॉज इट इज़ नॉट अबाउट सेल्फ ग्रोथ ओनली. अगर आप खुद ग्रो नहीं कर रहे, ऑर्गेनाइजेशन के बाकी टीम के लोगों को ग्रो करवा रहे हैं, तो इस तरह होता नहीं है. आपको खुद ग्रो करना है, आपकी टीम को ग्रो करवाना है, एंड देन ऑटोमेटिकली योर कंपनी, योर ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज इन प्रोडक्शन. फिर उसके बाद है लॉ ऑफ नेविगेशन. ये भी 21 irrefutable laws में से है, which says recognize your limits. You might be able to steer the boat, but you are not yet ready to chart the course. अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये देखें कि कहाँ आकर जो है वो लिमिट्स हैं, कहाँ क्या हमारी कैपेसिटी है, कितना हम अभी इस वक्त में काम कर सकते हैं, और कहाँ पर आकर मुझे दूसरों की ज़रूरत है जो इस हवाले से जानते हैं और ज़्यादा जानते हैं. स्टीयरिंग पकड़ लेने का ये मतलब नहीं है कि आप जो है वो सारा रास्ता भी जानते हैं. उसमें आकर यू रियली नीड अदर्स जिनको हो सकता है किसी बात में, किसी स्किल में आप बेटर हैं, लेकिन वहाँ पर आकर being a leader does not mean that you know it all. और टीम इसीलिए रिक्वायर्ड है. सोलो फ्लाइट इसीलिए निगेट की जाती है कि लॉ ऑफ नेविगेशन के मुताबिक नो कि आप बाकी आगे जानते हैं, डेस्टिनेशन की तरफ जाने के हवाले से यू नो मोर. अगर नहीं तो यू नीड मोर पीपल. उसके जो एक्सपीरियंस्ड है, दोज हु हैव द नो हाउ अबाउट द जर्नी, आगे मूव करने के लिए, आपके उस प्रोजेक्ट को लेकर चलने के लिए, आपके उस टारगेट को अचीव करने के लिए, आपकी प्रोडक्शन को एनहांस करने के लिए, और मे बी द एडवर्टाइजमेंट साइड उसमें तो इनोवेशन आती रहनी चाहिए. सो उसमें इनोवेटर्स के साथ कनेक्ट करने के लिए, मार्केटर्स के साथ फिर मार्केट वैल्यू जानने के हवाले से, और फिर आईटी के लोग हैं. इट्स अ लॉट मोर. सो इट्स नॉट जस्ट दैट वन डिपार्टमेंट, इसीलिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है. सो लॉ ऑफ नेविगेशन में जिसकी एक्सपर्टीज है उनको हम साथ लेकर उनके साथ नेविगेट करते हुए वी get to chart the course. And then the next slide is now moving on to level 2, जो level 1 पे ही build up करता है, position level या positional leadership पे, और हम इस पे भी बात कर चुके हैं. अब लोग आपको इसलिए फॉलो नहीं करते कि उनकी कोई मजबूरी है आपकी पोजीशन की वजह से. अब लोग आपको इसलिए फॉलो करते हैं तो वो आपको फॉलो करना चाहते हैं, उन्हें अच्छा लग रहा है आपके साथ काम करना, वो आपकी लीडरशिप को, आपके इन्फ्लुएंस को एक्सेप्ट करते हैं. एंड ये आपका फर्स्ट लेवल बनता है आपकी ट्रू लीडरशिप का. सो वहाँ हम देखते हैं कि आपके स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स जो बनना शुरू होते हैं,
ये लोगों को एनेबल कर रहे होते हैं कि वो आपके सिर्फ ऑर्डर के इंतज़ार में या उस वजह से नहीं आपको फॉलो कर रहे हैं. नाउ दे वांट टू फॉलो यू बिकॉज ऑफ द बिहेवियर you know you show towards them as a team and towards you know the company, the organization, in terms of the work and results. So this is how it is. Isme aakar, last line I read for you. Leading through relationships break down barriers to communication and deepens trust throughout the organization. So आप ये देखें कि सिर्फ एक शख्स जो है as a leader वो ग्रो नहीं कर रहा है, बल्कि थ्रू आउट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका एनवायरनमेंट चेंज होना शुरू हो जाता है. अगर लीडिंग रोल वाले लोग जो हैं वो अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ बातचीत कर लें या अगर उनके साथ हंसें, तो friendliness, frankness का difference है. So keeping the environment friendly really matters. Now इसके भी upside हैं और downsides हैं. So now I would request you out of the participants to please take part. Fatima, Bushra, Maima, Rehan, you did great previously. Yes, I want to add here. The upside of the permission is that makes work more enjoyable, a shift from me to we. Obviously, a leadership trait is not like I. It should be like we and us. लीडर होता ही वो ही है जो कैपेसिटी बिल्ड कर रहा होता है. ये नहीं होता कि अपनी कैपेसिटी को बिल्ड करे और स्विच कर दे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ. अगर लीडर is working in the organization for 3 to 5 years और उसकी टीम में इतनी कैपेसिटी बिल्ड नहीं हुई कि they move towards other position, तो there is no वो बंदा लीडर नहीं है. The person is not a leader at all. क्योंकि आप क्लरिकल वर्क में होते हैं, आप मैनेजरियल वर्क में होते हैं, whatsoever is the case, you should be having the capabilities of thinking and making a wise and good decisions. That is what leadership is all about. If we talk about the downsides of this point, is that can appear too soft for some people. Some may know. अच्छा, इसमें ये है no. A smart leader is no. He should be knowing कि मैंने कहाँ पे soft touch को रखना है एम्प्लॉयज के साथ, लेकिन वो भी बहुत स्मार्टली प्ले करते हैं उसको. और सॉफ्ट टोन है या एटीट्यूड है या बिहेवियर है, बट दे नो कि हाउ टू प्ले विद अ सॉफ्ट टोन विद द एम्प्लॉइज. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इंटीग्रल पार्ट. And if we talk about the second point, increase the energy level through the positive relationship. Obviously, leader is not a leader only कि उसकी position उसके पास है. He or she having a best or the great relationship among the employees. अगर वो relationship को ही best कर सकता है, तो उसपे वो सारे काम जितने भी tough हैं, either they are giving you a very pressure में काम कर रहे होते हैं, employees are ready to work with you. जो भी आप उनको task दे रहे हैं, even कि वो beyond the limits भी काम कर रहे होते हैं आपके लिए, और ओवरटाइम करने के लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट तैयार होते हैं. दे आर नॉट आस्किंग फॉर द मनी एट ऑल. और इसका नेगेटिव हम देख रहे हैं, कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर अचीवर्स बिकॉज द बिल्डिंग रिलेशनशिप टेक्स टाइम. Obviously, if a person is good in making a relationship with the employees, ये सबसे important से key element होता है. लीडरशिप की क्वालिटीज वही हुए कि आप हाउ टू मेक अ गुड रिलेशन विद द एम्प्लॉइज, और इसी की तो मास्टरिंग करनी होती है स्किल की, कि आप फौरन से और क्विकली रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करते हैं. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. थैंक यू. Thank you. Yeah. Anyone else? Thank you. That was a great. Ma'am, open up the channel of communication up and down side, down, up, down, and side to side. Ma'am, आप जब भी ऑर्गेनाइजेशन में कन्फ्लिक्ट भी राइज होते हैं, यू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ, आपको लोगों को मैनेज करना होता है. अगर आप सिर्फ खुद ही बातें करते रहेंगे, खुद ही सारी चीजें कन्वे करेंगे, वन साइड कम्युनिकेशन रखेंगे, तो मैम आपको फायदा नहीं होगा. आपको अलाउ करना चाहिए लोगों को, आपको टू वे कम्युनिकेशन रखनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हर बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो सुना जाए. और मे भी हो सकता है कि जो आप सोचते हैं कोई और बंदा अच्छी बात आपसे शेयर कर दे. और मैम इसके नेगेटिव साइड, परमिशन ऑफ लीडर कैन टेक एडवांटेज ऑफ पीपल मे मिस्टेक काइंडनेस एंड फॉर वीकनेस. मैम दैट्स वेरी ट्रू. जब आप एज ए लीडर या किसी डेजिग्नेटेड पोजीशन पे बैठे हो, तो हो सकता है कि आपसे जूनियर या जो बंदा आपसे डिस्कशन करे वो फ्री होने की कोशिश करे या इस चीज़ का फ्यूचर में एडवांटेज लेके. इस दफ़ा तो मैंने इनको मतलब मेरी इनसे बड़ी अच्छी गपशप रही, तो फ्यूचर में मैम वो एडवांटेज हो. दैट्स ऐसे होता है मैम, हमारे साथ तो होता ही है कि अगर हम किसी भी एम्प्लॉय के साथ चले जाएं, गलती से मैम एक कप चाय पी लेंगे या उनसे
छोटी सी गॉसिप कर ले तो मैम हमें वो कोशिश करते हैं कि इनके साथ जो है ना डिस्कशन की जाए उस लेवल पे, ताकि फ्रेंडली माहौल बना जाए। तो मैम ये एक लीडरशिप की मतलब एज ए परमिशन के लिहाज से जब आप अलाउ करते हैं किसी को, तो मैम इट इज the value of each person is realized by the leaders and followers, mutually respect is gained। मैम जब आपको रिस्पेक्ट गेन करनी है तो आपको दोनों साइडों पे हर एंगल से, हर लिहाज से दोनों की इज्जत का ख्याल रखना है, अपनी भी और दूसरे बंदे की। और मैम ऑर्गेनाइजेशन में इज्जत दो ही तरीकों से आती है कि आप पॉजिटिव रहें और अपना काम से काम रखें और अपने टारगेट को अचीव करते रहें। टू बी इफेक्टिव यू कैन, सेकंड इसका जो डाउन साइड है, टू बी इफेक्टिव यू नीड टू बी ओपन। मैम जब आप म्यूचुअली रिस्पेक्ट को गेन करते हैं तो मैम आपको वेरी ओपन होकर ना पड़ता है। आपको बंदे की कभी कभी ऐसी बातें भी सुननी पड़ती हैं जो आपको सुननी नहीं चाहिए, या फिर जिस वजह से टाइम वेस्ट हो रहा था बंदे का, बट यू हैव टू लिसन बिकॉज़ यू अलाउ हिम। Right, आप म्यूट हो गए। Here, can I add? Yeah, Fatima, yep, please. It's just an example. I have seen if the conflict is arising among the manager, line manager, or the person who is the subordinate working under the line manager, तो mostly मैंने यही देखा है, जितना practical experience है, कि decision हमेशा it would be go in the favor of the manager, not with the subordinate जो उसके under काम कर रहा है, क्योंकि it's all about influential leadership है। मैनेज लीडर्स हमेशा उसी को ज्यादा, आई नो लीडर शुड नॉट बी लाइक दैट, लेकिन होता मोस्टली ये कि लाइन मैनेजर्स उन्हीं को केटर किया जाता है, उन्हीं की हमेशा बात सुनी जाती है। someone is working under the line manager or the subordinate or the someone is working below the position of the manager, तो उसको इतना ज्यादा कंसीडर नहीं करते। दिस इज ऑलवेज द केस आई हैव सीन। आई डोंट नो कि बाकी सब ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है, बट आई हैव सीन दिस केस एज वेल। We are blessed to be in this organization because we are already a leadership training institute, so it does not happen here, but yeah, we know that it happens, and we really wish that organizations do opt the impact and the influence of true leadership or the positional leadership में से निकल आए और influence को जो है ना misinterpret करना छोड़ दें। Yeah, so the negative side कोई इसको last तो बताना चाहे? Tabitha, please. Hello, everyone. Hi. I actually wanted to add जो कि last point है, जो कि आपसे जो permission है, that is not first. So what I have experienced, I have noticed is अगर communication की transparency है between manager and subordinates within the organization, तो इससे बहुत अच्छे feedbacks भी आना शुरू हो जाते हैं। And sometimes within organization कोई ऐसी चीज हो रही है जो मैनेजर की, आपके सबऑर्डिनेट्स या एम्प्लॉइज कम्युनिकेशन में आप एक्सेसिबल हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपके नॉलेज में नहीं है वो आप तक पहुंचती हैं। अगर आपके साथ कोई कंफर्टेबल नहीं होगा बात करने में, तो वो कभी भी आप तक वो बात नहीं पहुंचा सकेगा। So I believe a manager should be always very open to the subordinates, transparency होनी चाहिए, overall trust culture development। Somehow what I got is there is a lot of, or we can say swear distortion in the line, but like it's a valid contribution from your side, and yeah, it happens that the more you communicate with people, आसानी होती है कि चीज़ें आप तक पहुंचती हैं, लेकिन जितना आप हिंदर कर रहे होते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं कम्युनिकेशन को, तो फिर वहाँ पर प्रॉब्लम भी होती है कि आप तक सारी बात नहीं पहुंच रही है या लेट पहुंच रही है और चीज़ें उस टाइम तक ख़राब हो जाती हैं, और ये आपके लिए चैलेंज भी हो जाता है। सो या लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। यहाँ पर आकर अब इस लेवल पर हम कैसे इस्तेफादा कर सकते हैं? हाउ टू गेन पीपल्स परमिशन टू बिल्ड अप रिलेशनशिप, द वर्क प्लेस रिलेशनशिप। सो उसमें you must get to truly know yourself before you can openly get to know others. So again, I would quote from John Maxwell. He says that somebody if asks me कि सबसे बड़ा challenge जब आप leadership की बात करते हैं तो वो क्या है? आपने इतनी किताबें लिखी हैं leadership पे, and you know what he tells, and he says the biggest challenge ever
I have faced is leading myself. So सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है कि before we talk about others and their leadership or like their abilities and their talents and their skills and knowing them, we have to know about ourselves. जब हम अपने बारे में ज़्यादा अच्छा सीख जाते हैं, हमारे strengths and weaknesses क्या हैं, हमारे जो है वो positive negatives क्या है, so उससे हमें फिर ज़्यादा अच्छे से आसानी हो जाती है कि हम दूसरों को समझ पाते हैं. And I believe you would agree with this. Then next is develop a leadership style that is focused on people rather than tasks. यहाँ आकर अक्सर चैलेंज होता है, जैसे अभी आई बिलीव फातिमा ने ये बात ऐड की है कि कुछ भी हो तो वो बात चली जाती है कि बस वो इस शख्स ने किया, इसकी पोजीशन पे रहते हुए, तो दूसरे लोग करें भी तो बात वहाँ पर चली जाती है. सो वो कामों पे बात रहती है और कामों से जो है वो गलत तौर पे इंटरप्रेट होती है. और आई थिंक दैट यू नो दिस इज हाउ इट गोज कि वो मिस इंटरप्रेट हो रही होती है और वो लीडरशिप को खैर शो नहीं कर रही होती है और लीडरशिप का इन्फ्लुएंस नहीं है. एज शी ऑलरेडी सेड कि हाँ समहाउ वो लीडर्स गिने जा रहे होते हैं. अगर आप ये कहें कि लाइक लीडर इज अबाउट अ पोजीशन यहाँ पर आकर, तो फिर नहीं, वो लीडर्स नहीं है, वो मैनेजर्स ज़रूर हो सकते हैं, वो यू नो एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी उनकी पोस्ट पोजीशन है वो हो सकते हैं, दे कैन बी द एग्जीक्यूटिव बॉडी, लेकिन दे आर नॉट द लीडर्स एक्चुअली. आगे है ट्रीट अदर्स एज यू योरसेल्फ वांट टू बी ट्रीटेड. तो या व्हेन इट कम्स टू वैल्यूइंग द पीपल, आप अगर इस चीज़ का लिहाज नहीं रख रहे हैं कि ये बात दूसरे को तकलीफ दे रही है, तो फिर कुछ भी करने से पहले थिंक कि ये मेरे साथ हो तो कैसे. अब बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हम सभी गुजरे हैं उन चीज़ों में से. आई बिलीव अगर हमने उन एक्सपीरियंसेस से अच्छा सीखा है, राइट, तो उन एक्सपीरियंसेस से सीखते हुए हम आगे औरों के साथ ऐसा नहीं करना चाहते जो बुरा हमारे साथ हुआ, जो कुछ बैड एक्सपीरियंस हमारा था. लाइक वी learned from those bad experiences, but we have converted them to the good experiences. और हम दूसरों को अच्छा तजर्बा देने जा रहे हैं. We are not going to do worse with them as we receive. Or I believe such leaders are here with us. And then praise along with words of encouragement are important. Be your team's chief encourager. So cheerleader होना, affirmations देना बहुत important है. आप लोग HR से relate करते हुए, you know it, like when you smile and when you you know tell a person you did a great job, चाहे वो छोटा सा काम किया है, it matters. You say thank you, you say sorry. छोटी छोटी बातें, and you know it makes a huge difference. It makes the other person being in your team feel valuable. और फिर ये भी कि you are acknowledged. आप आए हैं, आप उनकी नज़र में, आप ध्यान में हैं जब आप यही कह देते हैं कि कलर आप पे सूट कर रहा है, ये जो है वो आपने इस तरह से कल कर दिया that I did not know, और थोड़ा सा ऐसे इसको चेंज करने से आपकी वजह से ये अच्छा हो गया है, ये काम अच्छा हो गया, ये चीज़ अच्छी हो गई है. तो that really boosts up the other person's energy to give his best. आपको वहाँ पैसे नहीं लगाने पड़े हैं, लेकिन आपका काम होता जाएगा. And it's not that you are flattering, it's about affirmation, that truthfully आप तारीफ करने वाले हो, आप प्रेज करने वाले हो लोगों को, और आप वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट यूज करते हो. Yeah, so here I would like to quote that you know I read something that जब किसी का हौसला बढ़ता है ना तो वो दौड़ना शुरू करता है. तो बिल्कुल आप ये देखें कि जब हम छोटे बच्चे को चलते हुए देखते हैं and we appreciate and we you know praise that the child is doing great, child is doing well, और हम उसको कहते हैं बहुत अच्छा बहुत अच्छा. तो उसके वो छोटे छोटे स्टेप्स लेते हुए we get to see कि अब वो तेज चलना शुरू कर दिया. रेंगने से, चलने से दौड़ने की बात आ जाती है.
तो it's just like that when we have people with us, तो उनको जानना ज़रूरी है. Sometimes there are reasons जिस वजह से वो कई बार बहुत अच्छा काम करते हुए कुछ स्लो हो गए हैं. Get to know, हो सकता है कि वो इस affirmation की कमी की वजह से ही अच्छा नहीं दे पा रहे हैं. तो यहाँ पर जब आप perform करते हैं, already लोगों का एतबार एतकाद आप पे बढ़ता है, because one way you are helping them improve, you are encouraging them that they can do better, and you are acknowledging the skills and ability and capacity that they have within them. And next is, it is important to balance care for team members with kinder. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आप इस चीज़ का लिहाज रखें, आप ख्याल रखें और बैलेंस रखें कि आप अगर किसी एक को अपलॉड करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, तो आप दूसरों की भी करें. और हरगिज़ भी कहीं पर इस तरह से इम्बैलेंस ना आए, इसकी वजह से भी चीज़ें बहुत डिस्टर्ब हो जाती हैं. सो कोई शख्स हो सकता है कि इतना बोल नहीं रहा, लेकिन उसके सामने आप तारीफ कर रहे हैं तो उसको महसूस हो सकता है. आई कैन टेल यू माई ओन स्टोरी quickly that it happened with me. I was in an organization and like I was more about working, और मुझे उस टाइम पे apparently कोई तारीफ कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो मुझे लगता था कि मुझे इससे नहीं फ़र्क पड़ रहा, मुझे मेरा काम करना है, तो मुझे अपने काम के साथ सिंसियर होना है. लेकिन मुसलसल कुछ टाइम के बाद I found out that others were being applauded for their work, and when I was not, तो मेरी work efficiency affect हुई. और जब affect हुई, मैं खुद के हवाले से सोचना शुरू हुई, और रिफ्लेक्ट करने के बाद मुझे पता चला कि ये somehow मेरे अंदर ये चीज़ affect हुई है कि मुझे भी appreciation चाहिए. मैं उसको उतना openly कह नहीं रही थी, या उतना ओपनली शायद मैं फील नहीं करती थी कि नहीं, कोई कहे तारीफ करे तो मैं करूँगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ मुझे भी चाहिए. सो इफ somebody wants it or not, perform that. वो आगे जेस्चर दें आपको कि आपकी तारीफ से उन्हें फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा, फिर भी आप तारीफ करें. इट इज़ अबाउट यू, इट्स अबाउट देम. या सो अब यहाँ पर आकर कौन से लॉज हैं जो आपके इस लेवल को और ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं, तो क्विकली हम देखते हैं. लॉ ऑफ इन्फ्लुएंस है, जिसमें द ट्रू मेजर ऑफ योर लीडरशिप इज़ योर इन्फ्लुएंस. सो अब जितना ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे, आप उतना इस लेवल पे ग्रो करते जाते हैं. और फिर लॉ ऑफ एडिशन, जिसमें आप दूसरों की मदद करने से और उनको सर्व करने से आप ऐड करते हैं अपनी वैल्यू में, अपनी पोजीशन में भी, उनकी जिंदगियों में ऐड करते हुए. इसलिए फोकस ऑन पीपल नॉट सिस्टम्स. सिस्टम्स ज़रूरी है, यहाँ ये बात नहीं की जा रही है कि निगेट कर दें, लेकिन जब बात आती है फोकस की, तो पीपल शुड बी फोकस, बिकॉज व्हाट सिस्टम्स वुड डू इफ द पीपल आर नॉट देयर टू फॉलो द सिस्टम्स. So it's not that, impose the systems on people, make people walk into the systems, move around with the systems. And then solid ground, it's another law, jahan par it's really important to be trustworthy for them. When you are trustworthy, you are already building your solid grounds. Aur phir wahan par aapki leadership definitely, it's improving, it's grounded. And then magnetism. This is the law about, to be the type of person you want to attract. इससे पहले अब आप चाहें कि मेरी टीम में ऐसे लोग होने चाहिए, लोग ऐसे करें, ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की होनी चाहिए है, तो आप अगर ऊपर चेंज नहीं ला सकते, तो आपके साथ आपके अंदर आपके सुपरविजन में जो काम कर रहे हैं, वहाँ पर आप चेंज ला सकते हैं. इसलिए आप उनको वो बन के दिखाएं जो आप देखना उनमें चाहते हैं. और अक्सर फिर ये चीज़ अफेक्ट करती है. आई वॉज इन एन ऑर्गेनाइजेशन व्हेन आई वुड बी सजेस्टिंग देम द थिंग्स, तो उन्होंने कहा हाँ ये देख कर आ जाती है, ये इंटरनेट पे देखती है, ये वहाँ से आइडियाज़ लेती है,
और इस तरह से ये आके फिर बता देती है हमारे कल्चर का इसको नहीं पता, हमारी सोसाइटी, हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है और ये है वो है। वो सब मुझसे बड़े थे। Of course I could not change their mindset by just saying the things. What happened then that like under their supervision, like I was given freedom actually. So वो supervision सिर्फ इतनी थी कि now I could have my own group और उसके लिए मुझे इजाज़त मिल गई। And you know when I started working with that group, वो सब चीज़ें जो मैं उनको कहा करती थी I started doing with my own circle, with my team, with my group। और अब जब हम वहाँ पर कर रहे हैं तो करके दिखाते हुए you know जब अब मेगा इवेंट्स उनके होना शुरू हुए तो वो माइनर इवेंट्स में हमारी उन चीज़ों को देखते हुए उसके टेस्टिमोनियल्स को मेरी बाकी टीम मेंबर्स से जो और ऑडियंस थे उनसे सुनते हुए they already started appreciating and there came a time and a moment जहाँ पर आकर उन्होंने ये बात कही कि you know you did this yesterday और ये सारी डेकोरेशन और ये सब कुछ और ये इसको ज़रा as it is ही रहने दीजिएगा, सुबह we want to applaud you। और अगले दिन you know it was the mega event and you know like वो छोटा सा कॉर्नर, वो छोटा सा हिस्सा भी उसके साथ में शामिल किया गया and then they applauded us you know before many people, जो बाकी ऑडियंस और जो कॉन्ग्रीगेशन थी उसके सामने। और जब उन्होंने वो सारी चीज़ें कह डाली तो I was in a spirit of you know joy and I felt like having achieved something, a goal. Later on, when I sat down with them, I said, these are the same things that I would suggest you a few years back, but you did not listen to me. And now, as I did it practically, and you are acknowledging, you are applauding, it has really given me a sense of accomplishment that I was not wrong. And I never suggested anything wrong for this organization, which was not in its benefit, never. But you know, you did not understand me then. But I'm like glad now, and I feel so good कि अब आपके सामने होते हुए दिखी हैं तो आपने उनको appreciate किया है। तो it's always another way to do the things. So अब यहाँ पर ये ज़रूरी है कि be the type of person you want to attract. So now दूसरी साइड से जो लोअर साइड थी, लोअर इन अ सेंस दैट दे वर अंडर माय सुपरविजन व्हेन दे डिड इट, तो जो सीनियर थे वो ऑलरेडी उस चीज में आ गए दैट दे स्टार्टेड टेकिंग माय you know counsel and my suggestions, they started appreciating that. So now moving on to the next one, the law of connection. Work on relating to people. Yeah, it's really important, connecting to the right people for the right position to get the right results. And then it is the law of buy-in, where work to get people to buy into, which means trust you. So agar aap trust built up karte hain, then you are moving on to the next level. So beliefs to get to the next level, wo kya aqaid hain जो आप अगले लेवल के लिए जाए हैं। Recognize that there is more to leadership than just influence. ये इस पे बार बार हम बात कर रहे हैं। You have to take people somewhere. सिर्फ हमने इन्फ्लुएंस ही नहीं करते रहना उनको किसी और लेवल पे लोगों को भी लेकर जाना है कि वो बस यही ना देखते रहे ये अच्छा लीडर है, ये अच्छा लीडर है। हम उनको उस लेवल पर लेकर आए जहाँ पर उनके पीछे आने वाले उनको कहें कि ये भी अच्छे लीडर है। So as well as growing closer, you must grow together. तो सिर्फ ये नहीं है कि we grow closer to each other, like to the team, बल्कि उनको साथ लेकर फिर हम आगे को भी ग्रो कर रहे हैं। So जैसे I think फातिमा ने ये बात की थी कि you know it's vertically, horizontally both, and then sometimes it's worth risking our relationship to achieve a vision as a team. Sometimes team में आकर ऐसे लोग कोई एक आ जाता है जो है ना प्रॉब्लम क्रिएटर, ट्रबल मेकर, तो वहाँ आपको स्ट्रिक्ट डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं
और समटाइम्स यू नो आपको अपने रिलेशनशिप को रिस्क दिलाना पड़ता है कि आप बहुत अच्छे ताल्लुकात में हैं लोगों के साथ, लेकिन अगर वो बेनिफिट नहीं कर रहे ऑर्गेनाइजेशन को, कहीं ना कहीं कोई डिस्टर्बेंस आ रही है या उनकी वजह से ज़रूरी नहीं है कि वो नुकसानदेह हो सकता है कि किसी और को उस पोजीशन पर लाकर अगर ऑर्गेनाइजेशन कंपनी ज़्यादा बेनिफिट कर सकती है, आपका वो प्रोजेक्ट ज़्यादा अच्छा हो सकता है, तो फिर आपको वो डिसीजंस लेने पड़ेंगे. सो ये भी है जो नेक्स्ट लेवल के लिए रिक्वायर्ड है. नाउ लेवल 3, इट इज़ द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, जिस पे आकर आप रिजल्ट्स की बात करते हैं, और रिजल्ट्स हैं आपकी प्रोडक्शन के जो कंपनी की तरफ है, जो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ है, बिकॉज दैट इज़ यू नो इम्पॉर्टेंट. आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आए तो डेफिनेटली उसके फ़ायदे के लिए हैं. इसलिए अब जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो लोग ये देखते हैं कि यस दिस पर्सन इज़ डूइंग समथिंग, तो आपको हर लेवल पे लोग देखना शुरू करते हैं. रिस्पेक्ट दें ना दें अंदर से दिल से, लेकिन दे स्टार्ट यू नो सीइंग यू एज अ पर्सन. तो वहाँ पर आप थर्ड लेवल पे आके और ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन होने की ज़रूरत होती है. फिर यू नो देन यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ एज अ पर्सन विद स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक, क्योंकि अब आप एज अ लीडर सामने जब आ रहे हैं तो आपकी लीडरशिप और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रही है, तो उस प्रोमिनेंस को सस्टेन करने के लिए आपको और ज़्यादा वेल डिसिप्लिन्ड होके उस ऑर्गेनाइजेशन में दिखाना पड़ता है. एंड यू नो this is what a true leader does. It's not just to show up, but that is how a true leader is. And then you know also the skills where you can produce, and not producing for one time, not one-time results, but you continue giving the results. And then this is also the level where you are making things happen and getting results. And you know it's your ability to produce not only for yourself but also for the team, where you give leaders credibility, confidence, more influence. और यहाँ पर आकर जब आप काम करके दिखाते हैं तो you already attract more producers. दूसरे लोग भी फिर काम करना शुरू कर देते हैं. So अक्सर फिर जब लीडर्स काम करते नहीं नज़र आ रहे हैं तो दूसरे लोग भी कहते हैं अच्छा ठीक है यूँ ही गुजारा चल रहा है. तो this is how it affects, and environment फिर तब create होता है when you are working. You already are creating a work environment at this level, third level of production. इसकी upside है, downside है. Quickly I go through it. जहाँ पर आकर जो है वो लीडर को credibility मिलती है, लेकिन negative side ये है कि अब जितना फिर productive होते जाते हैं आप you know being productive can make you think you are a leader. When you are not, you still need level 1 and 2. तो उसमें आकर आपको पोजीशन रिक्वायर्ड रहती है, लोगों के साथ रिलेशनशिप रिक्वायर्ड रहते हैं. आप ये नहीं कह सकते कि अब मैं रिजल्ट्स दे रहा हूँ, मेरी वजह से कंपनी को ये फायदा हो गया तो ये बात मुझे लीडर बना रही है. हरगिज़ नहीं. यू स्टिल नीड योर लेवल 1, जहाँ पर आपकी पोजीशन को आपने देखना है, एंड यू नीड लेवल 2 वेयर यू हैव टू इंटरैक्ट विद पीपल और अपने relationship को strong रखना है. And then upside of production is models and sets the standard for others visually. Your productivity is the example that sets the standards for them. So यहाँ पर आप उनके लिए अमली नमूना बनकर सामने आते हैं. आपकी प्रोडक्टिविटी, इस पे हम बात कर चुके हैं, वो दूसरों को अट्रैक्ट करती है कि वो भी प्रोड्यूस करें. डाउन साइड इसकी ये हो जाती है कि अब आपने एक बार प्रोड्यूस किया तो अगली बार आपसे ज़्यादा की तवक्को है, आप कम नहीं कर सकते हैं. सो एवरी टाइम इट एड्स on to your responsibility. Next is upside is that it brings clarity and reality to the vision, communicate the vision through action. So I believe you all agree with this. जितना ज़्यादा जब प्रोडक्शन सामने, रिजल्ट सामने आते हैं, विजन क्लियर होता जाता है कि yes, this is what we want, this is what we have been after, और ये हमारा टारगेट था, ये हमारा गोल था. तो फिर आपको और ज़्यादा कम्युनिकेट करने में आसानी हो जाती है, क्योंकि एक रिजल्ट आपने अचीव किया जिसके ज़रिए आपको दिखाते हैं. देन डाउन साइड इज रिक्वायर्स मेकिंग डिफिकल्ट डिसीशंस, या क्योंकि आपको प्रोडक्टिविटी भी चाहिए, और इस वजह से कई डिसीजंस ऐसे हैं, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं
that you may replace the people, you may take hard decision to let them go, ये सब कुछ, or bring someone ahead of the other person who may think कि उसका आपके साथ ताल्लुक ज़्यादा अच्छा है, so फिर वहाँ पर ये चीज़ को देखना पड़ेगा. Then production solves a multitude of problems. Leadership as problem solving. So yeah, जब बात करते हैं productive leader की, तो फिर वो problem solver भी है. Yes, leadership is about problem solving. Demands continual attention to level 2. Yeah, जितना ज़्यादा आप productive हो रहे हैं, आप result oriented हो सकते हैं, but you cannot be so without being a leader at permission level, जिसमें आप लोगों के साथ ताल्लुक को बिगाड़ के छोड़ के productive नहीं हो सकते. तो इसलिए continual attention वहाँ देनी पड़ती है, और it requires more. So it's a negative side. And then upside is production creates momentum. Yes, जब एक बार आपने produce किया तो definitely एक momentum set हो जाता है, and you continue. And then leadership production is the foundation of team building. Everyone likes winning. Everyone likes accomplishing something big. And how to make the most of production and leadership is figure out where your strengths lie and focus on these areas. Communicate a clear vision. This will help with team productivity. Encourage your people to work together. Already इस पे हम बात कर चुके हैं. This is a foundation of team building, communication, and encouraging people. Then focus on areas with the highest return and never lose sight of the fact that results are your goal. So productivity की side पे ये अहम बात है कि आप highest return के areas को देखें और आप उस पर ज़्यादा काम करें, और हक़ाइक़ को हमेशा सामने रखें कि या आपको नताइज चाहिए, आपको प्रोडक्शन चाहिए, आपको आपका गोल अचीव करना है, ये कंपनी का टारगेट है. एंड देन लॉज जो इस प्रोडक्शन लेवल पे आपको इस्तेफादा दे सकते हैं, लॉ ऑफ रिस्पेक्ट है. तो इसमें है people will naturally want to follow leaders that they see as strong than themselves. So themselves, this is the tagline, कि अपने से ज़्यादा strong जब लोग किसी को देख रहे हैं तो फिर उसको लोग follow करना चाहेंगे. You always have to, if you are a true leader and you want to grow in your capacity, you always have to prove yourself on the better or greater level than the others. So next is law of magnetism. Who you are is who you attract. As पे हम बात कर चुके हैं. Law of picture. People's behavior mirrors what they see each day. So इस level पे अपने आप को as a leader prove करने के लिए, productive leader, sometime production नहीं होती उस level पर वहाँ पर फिर देखना है कि क्या आप उसी तरह से लोगों के साथ अच्छे हैं, उसी तरह से आप लोगों का हाल अहवाल पूछ रहे हैं, उसी तरह से उनके साथ बात भी कर रहे हैं, उन्हें अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, या अभी हमने थोड़ा बात की कि आपको स्ट्रिक्ट डिसीजंस कहीं लेने पड़ जाते हैं, बट दैट डज नॉट मीन दैट एकदम से आप रूड हो जाए, एकदम से आपका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाए कि लोग कहें कि ये वो शख्स ही नहीं है जिसको हम देखते थे. सो ऐसा कुछ भी नहीं एक लीडर दिखाता जैसे वो बिल्कुल एक कोई डिफरेंट पर्सन आ जाए और मास्क उसके ऊपर से उतर गया और वो फ्लैटरिंग हो जाएगी अगर फिर उससे पहले वो लोगों के साथ अच्छा बन रहा था, लेकिन उस टाइम पर उसे कंट्रोल नहीं है अपने बिहेवियर पर, अपने सेल्फ पर. सो सच अ पर्सन रिमेंबर्स, और वो इस वे में पिक्चर करता है खुद को, एंड सच पर्सन प्रूव्स दैट ही इज़ अ ट्रू लीडर जो हर तरह के हालात में अपने बिहेवियर, अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल करना और सिचुएशन को संभालना जानता है. देन लॉ ऑफ विक्ट्री. फाइंड अ वे फॉर योर टीम टू विन. यस, प्रोडक्शन में दिस इज अनदर लॉ जो सस्टेन करेगा. एंड देन प्रायोरिटीज. फोकस ऑन रिजल्ट्स एंड नॉट एक्टिविटीज. तो कई बार एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं. HR की बात जब हम करते हैं तो ये कई बार HR बहुत ज़्यादा लाइक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन उतने रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते हैं. तो कंपनी को एक्टिविटीज़ नहीं चाहिए हैं. दे आर इम्पॉर्टेंट, लाइक दे शुड बी देयर, लेकिन दे आर नॉट ऑल इम्पॉर्टेंट.
ultimately results are required. And then big momentum. This is another law. Momentum is your new best friend. So वो momentum set करना production level पे, it is important and required. Then law of priorities. Again, focus on results and not activities. Oh, sorry, I spoke about it already. And then law of sacrifice, let go of non-essentials. So गैर ज़रूरी चीज़ों को आप नहीं देखें, and you focus on the things where you get the results. And then buy-in, again, gaining people's trust. It's really important to sustain, with this level. And then beliefs to get to the next level. अब इस level से अगले level पर आप किस तरह से जा पाते हैं? Production is not enough. यहाँ पे बात खत्म नहीं हो जाती है. Think about how you can help people get to the next level in their lives and careers. So continually, you keep on thinking, being innovative, और क्या किया जा सकता है, कैसे बेहतर किया जा सकता है. Stagnation नहीं होनी चाहिए आपकी thinking में. And then value, challenge, and develop your fellows. So या इस पे बात कर चुके हैं. Value करते रहें, affirm करके और उनको challenge देकर आप you make them grow, और उनकी जो capacity, उनका जो potential है वो सामने आता है, और ऐसे में फिर उनका potential grow करता है, develop होता है. Growing leaders is the quickest way to achieve a vision. आप अपने साथ followers रखेंगे तो less production होगी, but when you are adding up to their leadership capacity, तो फिर ऐसा होगा कि जब आपकी जगह पे आप पीछे वाले लोगों को लाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप अगले लेवल पर जाएंगे, आप उनसे आगे बढ़ेंगे, आप और ग्रूम करेंगे. इस वजह से never be insecure, never hesitate to bring people to the level where you are, because when you are working on them to bring to the level where you are already, from this level of leadership, you are going to grow. And then developing your people gives you great fulfillment. Definitely, अच्छा करके अच्छा महसूस होता है. Level 4 है people development, the level of reproduction, जिसमें हम बात करते हैं. और अब thankfully this is the time and era जिस पे लोग इस हवाले से बात करना चाहते हैं. although अगर चंद एक बातें जो अभी मैं यहाँ पर थोड़ी देर पहले सुनी है, उसमें अभी भी है कि ऑर्गेनाइजेशंस में उस तरह से नहीं होता. इनसिक्योरिटीज़ हैं, कोई मेरी पोजीशन ना ले ले, कोई और डेवलप कर दिया तो थैंकफुल तो इसमें होना नहीं है, मुझे इससे मिलना क्या है, कोई रिवॉर्ड तो नहीं है, ये सारी चीज़ें. बट लीडरशिप डज नॉट थिंक अबाउट दिस थिंग. लीडरशिप इज अबाउट serving. As I already said, it is not a noun, it is a verb. So when you are improving in these levels, तो आप फिर ये जानते हैं कि सिर्फ मेरे अकेले से बात नहीं बननी है. If I shift from here, कुछ भी हो जाता है. It's not about ultimately dying. आप नहीं रहेंगे तो क्या होगा. So वो मरने ही की वजह नहीं हो सकती है. There may be a situation you fly out of the country and you get a better position in some other city. आपको shift करना पड़ता है. So उस मोबिलिटी की वजह से, मूवमेंट की वजह से, इट्स नॉट कि आपके मूव कर गए हैं तो पीछे लोग नहीं हैं. और सिर्फ यही नहीं बात है कि इफ़ यू आर ओनली मूविंग तब लोग आपको याद रखें. व्हेन यू आर देयर ऑलरेडी, सो इट्स अ गुड थिंग एंड इट इज़ वाइज. एंड अ ट्रू लीडर डज दिस, दैट ही adds more into more in the terms of capacity building. और वो सिर्फ इसी तरह से नहीं कर रहा है कि वो बस थोड़ा थोड़ा सा कुछ उनको दे रहा है. He is never hesitant or never afraid to add value to the people, thinking that they should be at the level where I am यहाँ पर हूँ. तो इस तरह से सोचना often it is hard. But ये खुदगर्ज लोग हैं जो नहीं सोचेंगे. A true leader would always think, और उसको किसी तरह का सोचते हुए कोई उसके माइंड में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगी कि वो ये यहाँ पर आ जाएंगे. सो ये वडेरा टाइप थिंकिंग जो है, दिस इज नॉट अ लीडरशिप. सो
This is the fourth level where it says people development, the level of reproduction, where people follow you because of what you have done for them personally. आपने उनको किसी टाइम में सिखाने में कुछ मदद किया है और कुछ सीखने में मदद किया है. Sometimes like people directly cannot teach us, but they invest in us. We always remember the organizations. We always remember the bosses, the colleagues, who invested in terms of money, maybe, or they bought me something, they bought us something. जो हमारे सीखने में मदद कर रही हो. तो इस तरह फिर to get a new job, a new position where I could learn, I could develop my potential. So why would I forget those people? I can never. Likewise, आपके लिए भी यकीनन. So long range growth occurs here because you are developing future leaders to carry the torch. Be important. यहाँ से I believe you get to understand more. And then इसके भी upsides हैं, downsides भी हैं. So upsides में हम देखते हैं कि जब आप इस लेवल पे आते हैं कि आप लोगों को डेवलप करना शुरू करते हैं as leaders, तो अब फिर बहुत सारे दूसरे leaders में नुमाया हो जाते हैं. It sets you apart. And most leaders stop at the production level. बहुत सारे ऐसे हैं, बस वो जब results लाते हैं तो वहीं पे अपनी ग्रोथ को रोक देते हैं और बस वो समझते हैं कि उन्होंने अल्टीमेटली अपना टारगेट अचीव कर लिया, whereby they can grow more. अब वो लोगों को तैयार कर सकते हैं. तो तैयार करने वाले जो लीडर्स होते हैं वो ऑलरेडी फिर कम ही होते हैं. तो कम होने की वजह से वो लोगों में नुमाया भी होते हैं, नेक नाम भी. और इसी तरह से डाउन साइड ऑफ पीपल डेवलपमेंट है, it requires high level of maturity and skill. Of course, we don't expect that any immature is going to, develop, another group of people. So, lazmi apne us area mein, jahan par, he or she can develop other people, he or she should be expert, mature, skillful, knowledgeable, और फिर जाकर वो उनको सिखा सकते हैं. Then people development assures that growth can be sustained. Helping people reach their potential will help the organization reach its potential. So the words say it all. लोगों को आप बेहतर करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगी. ये प्लस साइड है, लेकिन माइनस साइड ये है, सेल्फ सेंटर्डनेस कैन कॉज लीडर्स टू नेग्लेक्ट पीपल डेवलपमेंट. कि जब वो प्रोडक्टिविटी के लेवल तक तो पहुंच गए हैं, लेकिन उसके बाद अब खुदगर्जी वाला रवैया हो तो ऑब्वियसली फिर वो दूसरे लोगों को डेवलप करना नहीं चाहेंगे और वो निगलेक्ट कर देते हैं कि नहीं रहने दो, ये ट्रेनिंग की इसको ज़रूरत नहीं है, रहने दें, इनको ना भेजें, अब उनको भेज दें दूसरों को. ये हम सब सुनते रहते हैं इस तरह की चीज़ें. तो होता है. And then upside of people development is empowers others to fulfill their leadership responsibilities, empower people and they will share the load. इसका ये भी एक अच्छा फायदा है कि ज़ाहिर जब आपने उन्हें एम्पावर किया तो बैठने के लिए नहीं है, फिर वो कर सकते हैं आपके साथ जब काम, तो फिर वो करेंगे जब उनकी ये कैपेसिटी बिल्डअप हो चुकी है. और इसकी डाउन साइड है, इनसिक्योरिटी कैन मेक लीडर्स फील थ्रेटेंड बाय पीपल डेवलपमेंट, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इनसिक्योरिटी कॉज करता है. एंड देन अपसाइड ऑफ पीपल डेवलपमेंट इज एम्पावर्स द लीडर टू लीड लार्जर, गिव्स यू मोर टाइम टू थिंक एंड विजन एंड स्ट्रेटेजाइज. I repeat, empowers the leader to lead larger. ये उसकी लीडिंग टेरिटरी को एक्सपैंड कर रही है. जब वो लोगों को डेवलप करना शुरू करते हैं तो ऑफ कोर्स पीपल स्टार्ट obliging the person, people are more into honoring that person. तो उसकी वो टेरिटरी इनलार्ज हो रही है जहाँ पर वो दूसरे लोगों को लीड कर रहा है. और फिर उसके बाद आपको और ज़्यादा टाइम फिर मिल जाता है कि जब आपके साथ और लोग हैं, आपका काम बढ़ रहा है, तो
फिर आप और बड़े पैमाने और बेहतर लेवल पे सोच सकते हैं, मैं और क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, यू नो, फिर अब बेटर वे में एनविजन कर सकते हैं चीज़ों को. Just like, you know, last time in personal growth session I gave an example कि अगर कोई भी ये सोचे कि बुर्ज खलीफा जो है वो टॉलेस्ट बिल्डिंग बन गए, इससे आगे नहीं बन सकता है, तो यस, यहाँ पे बात ख़त्म नहीं हुई है. जब उस ग्रुप ने वो सोच लिया तो डेफिनेटली किसी और ग्रुप ने उससे बढ़ के सोचना शुरू किया, तो क्या ख्याल है वो ग्रुप वहीं बैठा रहेगा. नाउ दे वुड बी थिंकिंग टू बिल्ड even better, even more if they can. So they definitely would be thinking. This is how it happens. And then downside of people development is short-sightedness can keep leaders from seeing the need for people development. ये भी वो तंग नजरी की बात जहाँ पर लीडर्स जब नहीं चाहते कि लोगों को बढ़ाएं, क्योंकि अगर कर दिया तो कईयों को लगता है कि वो कल तो ये हमारे ही सामने बैठेंगे, हमारे बराबर हो जाएंगे. ये short-sightedness है. And then provides great personal fulfillment. The greatest satisfaction in life comes from helping others. So ये सब कुछ we all know that it does not come from money. That fulfillment comes from helping others. हम जब किसी के लिए कुछ करें तो हमें वो ज़्यादा अच्छा लगता है. And I believe it happens with all. Lack of commitment can keep leaders from doing the hard work of people development. यहाँ पर एक नुकसान इसका ये है, एक नेगेटिव साइड, कि जो लीडर कमिटेड नहीं है तो फिर वो लोगों like he or she cannot just invest more and cannot work hard लोगों को develop करने में. And then how to develop people? ये सब HR के लोगों का काम, that recruit only the best people you can, and that does not mean all the equipped people. इसका मतलब जब आप उनको रिक्रूट कर रहे होते हैं तो you know what your company requires, और अगर वो raw भी हैं, वो fresher भी हैं, you know that how you can equip them, और वो आपके लिए in long run किस तरह से effective होंगे. And then place people in the right position, model to others the leadership behavior you expect from them, and coach others to live well and perform well, empower others so they can succeed. And then इस लेवल पर आकर कौन से लॉज ऑफ लीडरशिप हैं जो आपको पीपल डेवलपमेंट लेवल पे देखने हैं, और यहाँ से आप फर्दर ग्रो कर सकते हैं. सो उसमें लॉ ऑफ प्रोसेस, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, दैट इट वाज अ जर्नी रीचिंग टू दिस लेवल, और इससे आगे भी ग्रो करने के लिए प्रोसेस अभी जारी है. एंड देन एडिशन, लॉ ऑफ एडिशन में आप वैल्यू दूसरों की ज़िंदगी में ऐड करते रहेंगे, सिलसिला जारी रहेगा, आप इसको स्टॉप नहीं कर सकते हैं. इनर सर्कल में आकर आपका इनर सर्कल आप देखते हैं, यू नो, अक्सर कहा जाता है कि अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स. सो जितने लर्नेड वाइज लोगों के सर्कल में आप रहेंगे, इनोवेटिव लोगों के सर्कल में आप रहेंगे, उतना ज़्यादा पर्सनली आप खुद सीखते हैं और आप यू नो develop करते हैं personally. So then law of empowerment, only a secure leader is willing to give power to others. Then law of exclusive growth, जिसमें developing new leaders is the only way to exclusively grow the organization. आप वहाँ पर रोक नहीं सकते हैं इस चीज़ को. And then by end, it's again about the trust that you you gain from people, and they buy into your vision. वो आपकी vision का यकीन करते हैं. And then beliefs at this level to get to the next level. Your biggest goal as a leader is to create more leaders and believe in developing a leadership culture. So ये याद रखिएगा कि leadership culture आपकी vision से ज़्यादा important है. कैसे? विजन अगर आपके पास है लेकिन आप आगे ऐसा कल्चर क्रिएट नहीं किए हैं जिसमें आप लोगों को डेवलप करें और आप उनको लीडर्स बनाएं, आप उनको एक लिबर्टी दें टू प्रैक्टिस देयर स्किल्स एंड टू एनहांस देयर एबिलिटीज़, तो वहाँ पर आकर आपका विजन कैसे फुलफिल होगा. लेकिन जब आप एक लीडरशिप कल्चर डेवलप करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में या आपकी टेरिटरी के अंदर आपकी स्मॉल टीम के साथ,
So automatically they start thinking, they start behaving as a leader, and then that is how the things improve. They get to learn the things, you get to teach and learn both, and then practice, then coach, and then ultimately you get the reward, and it's a win-win situation. Now this is the last level, and last means it's the extreme level, जिसमें हार्डली 1% लोग ही पहुंच पाते हैं. इतनी बड़ी दुनिया है, और उसमें आकर आप अगर देखें कि इस लेवल तक पहुंचे जहां पर लीडर कहीं है, हम कभी उससे मिले नहीं है, लेकिन उसका नाम हमारे सामने आए तो हम ऑलरेडी उसको जाने कि ओ या यू आर टॉकिंग अबाउट मदर ट्रीसा या लीडर. दुनिया हम यहाँ ईस्ट में वेस्ट में बात हो तो यू आर टॉकिंग अबाउट जिना द कायद. सो ही इज नोन एज अ लीडर देयर. पोइट्री बात करते हैं हम इलामा इकबाल की. सो through his writing he performed as a great leader for the youth. आज भी his poetry has an influence. So ये वो level है. ईदी साहब की हम बात करते हैं पाकिस्तान में, and उनका वो level है कि उन्होंने legacy छोड़ी है, और he could reach this level, और वो दुनिया के दूसरे ममालिक में जाने और पहचाने जाते हैं. So pinnacle लेवल वो लेवल है जिस पे आके एक शख्स रिस्पेक्ट गेन कर चुका है एज अ लीडर, और वो एक्नॉलेज किया जाता है. अब वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में है या नहीं है, लेकिन वो टैग, वो टाइटल अचीव कर चुका होता है, और वहाँ पर आकर फिर लेटर ऑन ये आपके पास पहुँच जाएगा. आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं. इसमें ये हम देखते हैं कि ऐसे लीडर्स जो हैं ये एक जिंदगी भर का इन्होंने टाइम लगाया होता है यहाँ पहुँचने के लिए, और अब ये ऐसे इन्फ्लुएंशियल होते हैं, ऐसे एक्सपीरियंस्ड होते हैं दैट ये अपना बाकी टाइम ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के नीचे आ चुके होते हैं, और उसमें नाउ एवरीवेयर दे गो अराउंड, एवरीवेयर दे आर वर्किंग, दे ब्रिंग सक्सेस, और लोग उनसे तवक्को ही कर रहे होते हैं, और वो उनको बुलाते इसलिए हैं. और दीज आर द पीपल who are known as intellectuals as well. अब इसके अपसाइड्स और डाउनसाइड्स ज़रूर देखना चाहेंगे. अपसाइड पॉजिटिव साइड ये है कि पिनिकल लीडरशिप क्रिएट्स अ लेवल 5 ऑर्गेनाइजेशन. डेफिनेटली अगर लीडर का लेवल जो है वो पिनिकल है और वो एक्सट्रीम लेवल पे आ गया, तो लेवल 5 ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, जिसमें आकर लीडर ऑलरेडी लेगेसी लेके चल रहा है. So I wish we have such organizations in Pakistan. I am a Pakistani, but so far what I have read about John Maxwell and we being as the team with them, we know that yes, their organization known as John Maxwell team, they are leading as a level 5 organization, जहाँ पर आकर उनके जो subordinates हैं, उनके जो leaders हैं, in themselves they are very well known leaders worldwide. They have written books, and not only the books are the books of words, but they are the books of experience. They are the institution, और उसमें practically बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं. So इसकी ये upside है, लेकिन downside ये है, being on the pinnacle can make you think you have arrived, और यहाँ आकर कई बार लिमिट लग सकती है कि बस इससे आगे अब कुछ नहीं है. हाँ, लेवल जो है वो इससे आगे नाम के हवाले से नहीं है, लेकिन इसमें ग्रोथ जारी रहती है, आप और ज़्यादा बढ़ते रहते हैं. लेकिन अगर आप नहीं बढ़ रहे, आपने स्टॉप कर दिया, बस अब लोगों में मेरा नाम हो गया, बात हो गई, किताबें लिख डाली, सब कुछ आगे बता दिया लोगों को, बात ख़त्म, तो वहाँ पर आपकी लीडरशिप die कर रही है. It's not growing. And then upside of pinnacle is that pinnacle leadership creates a legacy within the organization, make an impact beyond your tenure. और obviously जब आपका tenure organization में ख़त्म हो गया, तो अभी आपके बाद लोग याद रखते हैं. और यहाँ बात ये हो रही है कि इस लेवल की जो leadership है उसमें बाद अज़ हयात भी
जब वो जिंदा नहीं रहे हमारे दरमियान, तो भी हम बहुत सारे ऐसे लीडर्स को याद आज रखते हैं, कर रहे हैं. So that is what we should look forward to. And downside is being on the pinnacle can lead you to believe you're empress. Don't take yourself too seriously. यहाँ पर आकर आ सकता है कि वो मतलब जैसे आपको लगना शुरू हो जाए अब तो मैं बस खबर बन चुका हूँ, खबर बन गई हूँ, और जो कुछ भी है मेरी बात वो बस अब ऐसे है. तो इतना ज़्यादा सीरियस लोग अपने आप को लेना शुरू कर देते हैं कि बस अब मैं जो कुछ भी है वो खबर बन जाएगी, जो कुछ भी है वो खबर बन जाएगी. तो दैट ब्रिंग्स स्ट्रेस टू योरसेल्फ, एंड दैट आल्सो स्टार्ट्स making you think too seriously about yourself, जिसमें फिर your health, your mental health starts affecting, your growth starts affecting, and that troubles actually. And then upside of Pinnacle is Pinnacle Leadership provides an extended platform for leading. You can reach far beyond your own organization, जिस पे हम पहले बात कर चुके हैं कि फिर आप सिर्फ किसी एक organization के साथ मुंसलिक नहीं है, अपनी organization के साथ ही सिर्फ मुंसलिक नहीं रहते हैं. People do consult you, they want your counsel, they want your mentorship, they seek your coaching. So that is how it works. And the downside is being on the pinnacle can make you lose focus. Yes, because आप फोकस करते हुए इतना ऊपर आते हैं और वहाँ पर आकर फिर जब बहुत ज़्यादा नेम और फेम आ जाए तो आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं. And then how to use Pinnacle as a platform for what? How to serve people on this level of leadership. It's remain humble and open to learning. So I wish and I pray that all of us get to achieve and reach this level. Like usme aake humility is it's the target, and it should be the goal ke hum aajiz rahe, or we should not lose hold of it. Jisme aake sometimes we get to see that people, they become arrogant. They think that they are something. Whatever it is, you are nothing. First of all, without the creator, and secondly, without the people around you, without the team. So never a solo flight. And then create an inner circle to help keep you grounded. ऐसा inner circle जो criticize कर सके, आपके गलत को गलत कह सके, आप उसको trust कर सकें कि वो आपको like worthy and honest review देता है. आपको criticize अगर करते हैं तो वो आपके अपने लोग, ऐसा circle होना चाहिए जिसमें I do have a friend, and with her I share every positive and negative about myself, and I am always ready about her, to hear from her. If she criticizes me, I know she is doing it out of love, and she loves me to the extent where she does not want to see that wrong in me. So she is well learned, she is into profession, and I know that she would not suggest me wrong. So उनके साथ मैं चीज़ों को जब शेयर करती हूँ, ये pinnacle level की बात हो रही है, लेकिन sharing this thing because इसी तरह gradually we are going to reach to this level. और inner circle हमारा, we should not wait कि जब उस platform पे पहुँचे. Inner circle हमारा इसी level से होना चाहिए जहाँ पर हम अभी हैं. तो हम ये देखें कि हमें पॉजिटिवली क्रिटिसाइज करने वाले लोग हमारे इर्द गिर्द हों, हमारे इनर सर्कल में, ताकि लोगों के बात करने से पहले अगर हमारा अपना कोई हमें बता दे तो हम इम्प्रूव कर सकें. फिर उसके बाद है क्रिएट रूम एट द टॉप, जिसका मतलब कि अब पहुंच तो गए आप ऊपर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको कहें कि ये टॉप आ गया. अब वहाँ पर रहकर आप और भी ज़्यादा देख सके how better you can build up more, and then focus on what only you can do, your core strength. तो उस लेवल पर अब पहुँचे हैं, क्या आपका एक्सपीरियंस है, क्या आपकी एक्सपर्टी हो गई है, और वो अगर आपके ही पास है तो try to focus on that more. वो करने के ज़्यादा ध्यान में रहे और बजाय और बहुत कुछ करने के why focusing on that core strength? Because आपके पास जो टाइम है आप
उस कोर स्ट्रेंथ को लोगों के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा दी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इम्पार्ट कर दें, दैट इज़ बेटर देन डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स and giving them the divided portions and giving them not the complete thing. So yeah, then plan your succession and your legacy. Really important. आपके बाद कौन होगा, आपके बाद कौन करेगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए कि अच्छा लीडर अपने बाद की सोच रहा होता है कि मेरे बाद कौन देख सकेगा, चीज़ें चलेंगी। ये नहीं कि लीडर गया तो चीज़ें भी गई, ऑर्गेनाइजेशन भी ख़त्म, टीम भी ख़त्म, सब बिखर जाए, ऐसा नहीं है। एक अच्छा लीडर समेट कर जाता है, बिखेर के नहीं जाता। एंड देन इस लेवल पे सस्टेन करने के लिए, इम्प्रूव करते रहने के लिए कौन से लॉज रिक्वायर्ड हैं? लॉ ऑफ रिस्पेक्ट, जिसमें people naturally gravitate towards leaders who are stronger than themselves. And then a law of intuition. Intuition, you will be able to see what courses of action lead to what outcomes. कि हर अमल पे रद्द अमल क्या होने जा रहा है, तो ये इस लेवल पर देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसका मतलब हर अमल के लिए आपको अच्छा खासा टाइम लेना पड़ता है सोचने के हवाले से, इसलिए कि फिर आप उसको रिवर्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर you don't mind it in this way, I'm just setting I'm just sharing it for an example set by a leader who was very well known by people, and he got a great position लोगों के दरमियान. He came up with a leader as for studies, religious studies, and then एकदम से TV host के तौर पर programs में लोगों ने उनको लेना शुरू कर दिया, and later उन्होंने अपने actions का ध्यान नहीं रखा, and because of relationships that he married a couple of women who became his wives, चीजें खराब हुई, and at the end he committed suicide or he got killed, who knows, but that is where his intuition brought the bad outcomes. और ये बहुत ज़रूरी है कि ये देखा जाए कि आपके हर अमल का रद्द अमल है। सो अमल से पहले सोचना ज़रूरी है, रद्द अमल के बाद सोच भी लें तो हम रिवर्ट नहीं कर पाते चीज़ों को। Leadership is about this, and then timing. You will have learned how to take the right action at the right time. And then legacy. Your legacy will be measured by your successors. आपके सामने तो ठीक आपको लोग याद रखें और आपकी तारीफ हो, लेकिन हकीकत में आपकी लीडरशिप का पता चलता है जब आपके बाद भी चीज़ें उस तरह से की जा सकती हो और उसमें आपका किरदार रहा हो। Then legacy, explosive growth. Developing new leaders is the only way to explosively grow the organization in a way you could never achieve on your teamwork. Thank you so much for such precious time. I've taken 2 hours, less than 2 hours, break time nikalne ke baad, but I really appreciate your patience and availability. If you have any question, you may please drop in the WhatsApp group. Mansoor Saab, please. Thank you very much for your patience, and thank you very much Jalal for having such a wonderful session. This is very much important. I will share related material with you in the group, and I will share the link to the recording of this session. So किसी को भी कोई question हो, you can ask in WhatsApp group. कहीं पे भी आप बात कर सकते हैं, किसी भी लम्हे में आप चाहें तो आप कोई सवाल कर सकते हैं, किसी भी कंसेप्ट को अगर क्लियर करना है तो आप उसमें बात की जा सकती है। तो अभी हम इसको आज के दिन को क्लोज करते हैं, वाइंड अप करते हैं, और फिर इसके बाद इंशाल्लाह कल बात होगी। कल भी लीडरशिप डेवलपमेंट के हवाले से हमारा एक टॉपिक होगा जो हम कल डिस्कस करेंगे, राइट। और थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।